या हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सब बहुत अच्छे हैं। जस्ट मुझे एक बार कंफर्म कर देने दो स्टूडेंट्स, या दैट वेदर वी आर लाइव और नॉट। जस्ट 1 मिनट। आई होप हम तो लाइव है। तो या दिस साइड योर फैकल्टी फॉर एपीएम चार्टर्ड अकाउंटेंट अश्विनी भानुशाली। ओके, आज हम करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, ओके। सो या बेसिकली वी आर लाइव। So today students we are going to do the most important topic means अगर आपने अब let's say अब दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हो for giving up the paper in December, so definitely आपने सारा कुछ backend study कर लिया होगा. Backend study means maybe you would have studied all the materials या आपने काफी सारे questions को practice किया होगा. But yeah students, I would like hardly request you कि अगर आप पेपर लिखने वाले हो definitely this December, तो आप पेपर जब लिखोगे उसके पहले एटलीस्ट ट्राई टू गिव द मॉक्स. सो यस स्टूडेंट्स, द अल्टीमेट थिंग टू सक्सेस इज बाय राइटिंग मॉक्स एंड बाय प्रैक्टिसिंग मॉक्स. सो आज स्टूडेंट्स हम ना मॉक पेपर को प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले आई जस्ट ओपन अप द मॉक जो हम करने वाले हैं. तो या मैं अगर पेपर ओपन करूं जो मॉक हम करने वाले हैं, उसके पहले दो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा डे 1 का लेक्चर यूट्यूब रिविजन नहीं देखा है, and like जिसका ये like the first time है for giving up the ACCA APM papers, for them it's just small tricks and tips, okay, about कि कैसा पेपर आएगा, how are we going to go ahead with. Okay, just give me a minute. I hope the PPT is visible with you guys. Yeah, I wonder it's yes. Just मुझे एक बार open कर लेने दो एक और बार. So yeah, so students, for giving the paper, जब आप APM पेपर की बात करें स्टूडेंट्स, Advanced Performance Management, definitely we know that the APM ka paper will be there for how many marks? So we'll say ma'am it's 100 mark, we know. Okay. So out of 100 marks that you are going to write it, आपको सच में कितने मार्क्स का लिखना है? आपको 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, मतलब आप 100 मार्क्स का लिखने वाले नहीं हो. तो फिर मैम हम कितने मार्क्स का लिखेंगे? Yes. Students, we are going to write for only 80 marks. And ma'am वो जो 20 marks है वो? Yes students. Now this 20 marks are for your professional markings. Yeah, professional markings. Means अगर आपने ये 80 मार्क्स का आंसर एकदम परफेक्टली लाइक आपने डिस्क्रिप्टिवली लिखा, यू हैव क्लियरली कॉन्शियसली अपने आंसर्स को प्रेजेंट किया, सो स्टूडेंट्स आपको ये 20 मार्क्स भी प्रोफेशनली मिल जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, व्हाई इज दिस प्रोफेशनल मार्किंग सो मच? Prior to some 2-3 attempts, these professional markings were restricted to like 5 or 10 marks. बट अब ये इंक्रीज होके मैम 20 मार्क्स क्यों हो गया है? सो ये नॉर्मली देखा गया है स्टूडेंट्स के एपीएम बिकम्स द लास्ट पेपर फॉर यू गाइस. जो भी लाइक पी लेवल में आते हैं, फर्स्ट दे गिव द कंपलसरी पेपर्स एंड फिर ऑप्शनल्स में सबसे पहले पीपल विल स्टार्ट अप विद ट्रिपल ए एंड देन पीपल विल कम अप विद एपीएम और व्हाटएवर द स्टफ इज. ओके, तो अगर ये आपका लास्ट पेपर है, तो सून यू आर गोइंग टू बी द ACCA प्रोफेशनल, दैट इज द लाइक you'll be a qualified ACCA या तो affiliate, fine. तो अगर आप affiliate बन जाओगे, so you being a qualified ACCA, a recognized professional, तो students जब हम present करेंगे before our clients, हमें भी professionally behave करना पड़ेगा. So yes students, whatever reports I have to write, whatever answers I have to present, मैं खाली financial terms में लेके दिखने दूंगी कि लो भाई एग्जामिनर चेक करो आपको जहां समझ में आता है. So no, अगर मैंने ऐसे किया, the examiner will have a negative image in his mind and वो हमारे पेपर्स को जो हमने 3 months की हार्ड वर्क किया है टू स्टडी, 3 hours को डिवोट करके 3 hours and 15 minutes को डिवोट करके जो पेपर को लिखा है, we'll just make our destiny denied within half an hour, within 30 minutes. So मैं नहीं चाहती कि हमारे कुछ भी मार्क्स ना प्रोफेशनली लिखने की वजह से कट हो. मीन्स ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स के हमें आंसर आते नहीं है, आंसर्स हमें आते हैं, बट द वे वी हैव टू राइट वो नहीं आता. एंड दिस इज ओनली अचीव्ड अगर आप मॉक पेपर्स को प्रैक्टिस करते हो. So students, a very good news that we together are going to do the 2 mock papers. एक साथ हम लोग 2 mock papers कर लेंगे and within like less than 6 hours. So students, मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे? We'll be discussing 2 important mock papers and मैं आपको शो करूंगी the way to write the answers. Okay. So this was just about the markings and I hope कि आपको marking schemes तो पता है already, you would be knowing this stuff. Okay.
So when it goes to exam students, it's basically 3 hours and 15 minutes paper. So it takes nearly 195 minutes. Yeah, जिसमें आपको 100 मार्क्स का सिक्योर करना है. But 100 marks secure करना है, that is for sure. But you have to write only for 80 marks. So to achieve 1 mark, guys, we get 2.4 minutes. So students, I am telling you कि आप मेरी बात याद रख लो. Students बोलेंगे कि मैम, we were knowing the concepts, but हमारा पेपर छूट गया. Why? Because हमारी टाइपिंग स्पीड इतनी नहीं है. Because it is not a paper on paper and pen. Yeah, it's not a paper to be written on paper and pen. अब ये examination है मेरा to be written on my PCs, isn't it? So it's a computer based exam. And another way है कि आप मुझे पूछोगे कि मैम, like I know you would have already given other papers of ACCA for sure. आप पूछोगे कि मैम मुझे लिखना कहाँ से है, like घर पे से. So it's basically two option. आप remote exam भी दे सकते हो, आप चाहे तो computer based exam भी दे सकते हो, means you can go to center based. बट अगर आप मुझे टेक्निकली पूछोगे, पर्सनली पूछोगे, आई विल से कि गो इनटू द सेंटर एंड राइट द पेपर. व्हाई? यू नो, आप ऑलरेडी जब घर पे लिखोगे, लाइक रिमोट एग्जाम्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी रिस्क, टेंशन आपका रिस्क. अब रिस्क में आप कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे. बट अगर सेंटर्स में इफ देयर इज एनी कनेक्टिविटी इशू, इट्स नॉट योर रिस्क. वो सेंटर्स विल बी लायबल. ओके, सो दिस कैन बी इन सिचुएशन. ओके, अब मेरा पेपर आता कैसा है. So yeah, going ahead with the paper pattern. Yeah, this is what I have explained you in the first class also. Paper pattern means students, it's two sections. Yeah, section A and section B. So students, जब हम section A की बात करते हैं, comparatively section A is a very big thing to understand, but to write answers it's easy. Section A is having only one question, which is worth 50 marks. Section B, there are two questions worth 25 marks each. अब मैम ये तो हो गया टोटल 100 marks. But out of this 100 marks, in the first question, I will write only for 40 marks. Only for 40 marks. So 10 marks are my for like professionally आपने लिखा professional communication. हमेशा आएगा communication. So what's communication? Students, ये आप लिख लो कहीं पे. Communication means what? यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में always you have to draft either a report. आपको रिपोर्ट बनाना है या तो आपको नोटिस बनानी है. सो अगर मुझे रिपोर्ट या नोटिस ड्राफ्ट करनी है तो मुझे एक डेजिग्नेशन पता होना चाहिए. हु एम आई, विच कंपनी आई एम रिपोर्टिंग, कौन से डेट पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम किस मुद्दे पे रिपोर्ट कर रहे हैं. तो उसके तरीके से मुझे लेटर राइटिंग के जैसे मुझे बनाना पड़ेगा. ओके, द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, इसमें 20 मार्क्स का आई राइट, इसमें भी 20 मार्क्स का आई राइट. सो फ्रॉम योर 5 मार्क्स इज माई प्रोफेशनल मार्क्स एंड आउट ऑफ योर 10 मार्क्स आर माई प्रोफेशनल मार्क्स. सो व्हेन आई से अबाउट द प्रोफेशनल मार्क्स गाइस, तो प्रोफेशनल मार्क्स में क्या क्या आता है. सो ओके, इफ आई गो टू प्रोफेशनल मार्किंग गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो लोग आपका देखेंगे कि आप कैसे आंसर्स का खाली फिगर्स फाइंड नहीं करते. सी, फाइंडिंग फिगर्स इज समथिंग जो शायद कॉलेज स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट माई नॉर्मल ग्रेजुएशन, राइट. तो व्हाट दे वांट कि आप इवैल्यूएट करो फिगर्स, इट्स कूल, बट ट्राई टू एनालाइज इट कि इफ दिस इज अ जीपी रेशियो, इफ दिस इज एन आरओआई, तो ये क्यों है, हाउ एम आई कंपाइलिंग इट. ओके, मुझे ये मिल कैसे रहा है. ओके, सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन देम, राइट. देन यू हैव टू आंसर इट. कैसे? आपको अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आपका जजमेंट हमेशा रेडी रखना पड़ेगा कि मुझे क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है. एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, लास्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कमर्शियल एक्यूमेन टू. स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, डेफिनेटली दिस पॉइंट मैं नेक्स्ट आपका मॉक पेपर में आपको डिस्कस नहीं करूंगी, बिकॉज इट इज एनी विच वेज द रिपीटेड स्टफ. ओके स्टूडेंट्स, ये ओवरव्यू था एग्जामिनेशन का. सो हमें बिफोर एग्जामिनेशन, आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, बेटिंग ऑन दैट कि आपको आपकी सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करना है बिफोर यू राइट द पेपर. अदरवाइज आंसर आने के बाद भी यू विल नॉट फील सो मच ऑफ कॉन्फिडेंट. ओके, तो या विद दैट ओवरव्यू एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट मॉक पेपर. एंड स्टूडेंट्स, जिसे हमें पता है कि हमने जो मॉक पेपर्स की बात की ना स्टूडेंट्स, वो like just give me a minute, let me first open it. स्टूडेंट्स, जो मॉक पेपर की बात की है, ये रीसेंट चेंजेस आए हैं, लाइक कि आपको लिखना कम है, राइट, एंड यू गेट द प्रोफेशनल मार्क्स. बट जब मैं मॉक पेपर ले रही थी, आई वाज थिंकिंग अबाउट कि हम ऐसे पेपर्स को क्यों ना लें जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस बहुत है.
Yes, students. So I have taken up one very good chapter, or sorry, the paper, which is basically September 2029 का. Okay, I think ये visible है आपको. Yeah, September 2019. Okay, this is the paper. This is the background of the paper. Okay, अब now we will not delay any further moments. हम सीधा चलते हैं कि कैसे उन्होंने बोला है हमें लिखने के लिए. Okay, let's just read it. So about 8 p.m. if you read it, your times will be 3 hours and 15 minutes, जो कि होते हैं 195 minutes, in which हमें लिखना है for 80 marks. Okay, and secure 100 marks. Question 1 is compulsory and question 2 में there are 2 questions. And I am very pretty sure हमें सबको पता है कि कोई भी question exemption वाला या आपके पास उसमें option नहीं है, everything is compulsory. Okay, so यहाँ पे students how to write, how not to write and everything extra things are given. So without any reading this all stuff जो हमें already पता है, let's start with section A's first question. तो जब मैंने आपको section A की बात की students, you know that section A will be very big question because it is worth 50 marks. Yes, because it is worth 50 marks. अगर ये question है worth 50 marks का, so definitely इसके अंदर काफी सारे concepts आएंगे. And students, कोई भी एक chapter में से there is no such all the concepts. So different topics में से they will formulate a one single question. And I am telling you students, जिन्होंने भी revision series देखे हैं मेरे with the 5 most important topics, I am betting you guys कि आप ये paper को manage आराम से कर सकते हो. Okay, so yeah, let's just start. Okay, so this is a compulsory question and this is the question number 1. So students, अगर आपने CBE platform देखा है, so the first page on the first para, यहाँ पे होता है story background, like okay normal कि ये क्या है, क्या company है, etc. Number 1 exhibit, number 2, number 3, number 4. So the first exhibit will be the company's information. What is the company's background? उसके नीचे exhibits will be given. उसके नीचे guys, an extra will be given. An extra में there will be some calculative portion जो हमें calculate करना है. Simple calculations. Okay. जो आप अपने आंसर्स को फॉर्मुलेट करते वक्त आप उसको यूज करोगे. ओके, एंड उसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिक्वायरमेंट्स, जो हम रिक्वायरमेंट्स पढ़ के ही अपना आंसर और क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करेंगे. मीन्स अगर आप क्वेश्चन देखो तो सो बिग क्वेश्चन, ओ माय गॉड सो बिग. जस्ट सी स्टूडेंट्स, लेजिटली ये क्वेश्चन में ही मुझे 45 मिनट्स लगता है टू एक्सप्लेन. या सम अपेंडिक्स, ओ अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. इट्स मोर डाउन, बट इन बिटवीन देयर इज सम रिक्वायरमेंट्स. सो हम ना स्टूडेंट्स पहले ये रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं. What have they asked us about the requirements? Making it with bold, yeah. So with the students, जब हम requirements पढ़ते हैं ना, we get a clear idea कि question पूछा क्या है, and we go into that direction कि कौन सा chapter इसमें hit कर सकता है, कौन से concepts इसमें hit करेंगे. Okay, so yeah, without any further delay, let's just read it the first question. So हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला question 1 will always be what? It's a report. इसके लिए आपको commercial marks मिलता है. एंड ये जो मैंने पेपर लिखा है इट्स वेरी पुराना. सो इसमें वो 10 मार्क्स वाले प्रोफेशनल मार्किंग्स नहीं है, इसमें खाली 4 मार्क्स है. हमें ज्यादा एक क्वेश्चन मिला, दैट्स ऑल. ठीक है. ड्राफ्ट रिपोर्ट, तो मुझे लिखना है रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ फॉर द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स. ओके, फॉर द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी क्राउन ओक. सो हमारी कंपनी का नाम है क्राउन ओक. ओके, तो माय कंपनी, दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग. अभी तक मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया. ओके, मुझे रिपोर्ट लिखना है टू द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ क्राउन ओक, जिसमें मुझे बताना है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आए. विच रिस्पॉन्सेज टू द इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्क जो आपको मिला है. कौन से एरियाज की बात आप करोगे. फर्स्ट इवैल्यूएशन. ओके, मैं ना एक लाइन आराम से लीव कर देती हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. या सो आई जस्ट टेकन अप ताकि ना आपको क्लियरली विजिबल हो. ओके, चलो. व्हाट आर द डिटेल्स दे हैव आस्क्ड अस. पहली बात, evaluate them, आंसर उनको करो for the fit between current KPIs and CFLs. Okay, so this is a chapter, this is a concept from chapter number 1 जो हमने रिविजन में लिया था. कोई भी कंपनी अगर सक्सेस चाहती है तो दे हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कि कैसे वो सक्सेसफुल हो सकती है. तो दे हैव इंडिकेटर्स दैट इज नोन एज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. एंड वो अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को सबसे बेस्ट तरीके से यूज करते हैं, मींस द बेस्ट वे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपनी सक्सेस.
तो फिर वो CSF भी अचीव कर जाते हैं, दैट इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स. तो या वी विल इवैल्यूएट दैट. सेकंड, इवैल्यूएट करना है हाउ वेल द CSFs, हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, हेल्प कर सकते हैं हमें टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव प्रेशर, ओके, फेसिंग बाय माय कंपनी. मीन्स ऐसा कुछ हो सकता है दैट माय कंपनी विल ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स. जैसे कि इफ मेरी टीचिंग है, डेफिनेटली देयर आर अदर ट्यूटर्स. तो व्हाट इज माय CSFs, व्हाट इज माय सक्सेस फैक्टर व्हिच इज मोर बेटर देन अदर्स. मतलब ऐसे हो सकता है क्वेश्चन. ओके, देन वी हैव अ थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग TQM. हमने कल ही किया. व्हाट इज TQM गाइस? या माय TQM इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. सो कंपनी को समझना है एज पर द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स. मीन्स खाली फाइनेंशियल डेटा टुडे आर नॉट इनफ कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देखा कि भाई प्रॉफिट्स बहुत है, कंपनी बहुत अच्छी है. नो स्टूडेंट्स, दैट इजंट इनफ. तो आपको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे भी मैनेजमेंट रखना होगा. आपको चेक करना होगा कि जो क्वालिटी उन्होंने डेफिनेटली क्वांटिफाई किया है, बिकॉज वी नो क्वालिटी को मेजर करना इज डिफिकल्ट. सो दे हैव टू कीप एन आई ऑन क्वालिटी ऑल्सो. सो अगर आपको याद हो, हमने किया था वी हैव कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. मीन्स अगर मुझे मेरे कंपनी की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करना है, तो वो मेंटेन करने के लिए मुझे कुछ खर्चे भी इनकर करने पड़ेंगे. जैसे कि आई हैव 4 कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ गुड कॉन्फिडेंस, कॉस्ट ऑफ बैड कॉन्फिडेंस, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस. जैसे कि आपने यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिया, आपने ध्यान ही नहीं दिया कैसे यूनिट्स थे, क्या था, तो क्या होगा, गड़बड़ हो गई ना. तो इंटरनल फेलियर्स हो जाएंगे. मीन्स स्क्रैप बहुत निकलेगा, आपको वापस रीवर्क करना पड़ेगा एंड ऑल. बट वही सारे प्रोडक्ट्स आपने अपने कस्टमर्स को भी दे दिए. ओ माय गॉड, फिर कस्टमर्स आएंगे कंप्लेंट लेके, कस्टमर्स को रिप्लेस करके दो, बहुत सारी चीजें होगी. या तो ये सब ना हो, टू अवॉइड दिस वी हैव गुड क्वालिटी कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट. मीन्स वो चीज होने के पहले ही अगर मैं प्रिवेंट कर लूं, मीन्स मुझे लग रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये सप्लायर से लिया ना तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी बहुत खराब आती है, तो प्लीज सप्लायर पे चेक कर लो पहले कि रॉ मटेरियल कैसा है. अगर आपको लग रहा है कि वो सप्लायर अच्छा नहीं दे रहा है, तो प्लीज किसी और सप्लायर के पास चले जाओ. सो इट्स ऑल दैट वे, इट्स ऑल दैट वे, इट्स अ कपल ऑफ एवरीथिंग. सो इट्स प्रिवेंशन. इनपुट आउटपुट होने के पहले ही आपने चेक कर लिया. फिर एक बार आपने परचेस कर लिया, आप प्रोसेस में हो, ऑन गोइंग, अभी तक आपके प्रोडक्ट्स रेडी नहीं हुए हैं, उस बीच बीच में आप टेस्टिंग कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, ताकि आपको जल्दी ही गड़बड़ी पकड़ में आ जाए. तो दैट इज नोन एज appraisal cost. Okay, so there are certain benefits जो हम लिखेंगे. Good. Then I told you students, अगर आपको याद हो, दो कॉन्सेप्ट आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, दैट इज बेंचमार्किंग एंड BBM, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. अगर आपने वो छोड़ के गए तो डेफिनेटली यू विल मिस आउट अ वेरी ब्यूटीफुल मार्क्स. स्टूडेंट्स, द बेनिफिट्स ऑफ बेंचमार्किंग. एंड जब बेंचमार्किंग की बात आती है तो हमें दो तीन पता होना चाहिए चीज. द बेंचमार्किंग मीन्स अ कंपेरिजन. मेरी कंपनी को मैं किसी से तो कंपेयर करूंगी. सो फॉर दैट नेक्स्ट चीज में आपके पास होगा कि ये मेरी कंपनी है, ये कोई और कंपनी है, उनकी फाइनेंशियल से आप कंपेयर करो. ओके, सो ओवर हियर माय परफॉर्मेंसेस, कंपनीज परफॉर्मेंसेस, दिस इज ओक्स परफॉर्मेंसेस, आई हैव टू बेंचमार्क अगेंस्ट द हेंडरसन्स. ओके, सो ये तो मैंने अभी तक स्टोरी पढ़ी भी नहीं है, ये मुझे हिंट मिल रहा है कि शायद दो कंपनीज का कंपैरिजन होगा. यस. लास्ट, आपको बताने हैं बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस मेजर्स इन बोनस स्कीम. सो या गाइस, दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज देयर फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ बोनस. मीन्स लंबे समय के लिए अगर आप ये कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस मेजर्स, अगर आपको कुछ बोनस स्कीम मिल रही है, बोनस मिल रहा है, तो उसकी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है. तो नॉर्मली पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, छोटे टर्म के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए ना वो लोग जानबूझ के मैनिपुलेट करते हैं ताकि उनको बोनस मिल जाए. बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज एंड ऑन, तो लॉन्ग टर्म में वो कंपनी बाहर हो जाएगी. तो ये भी नहीं करना होता. ठीक है, ऑल दिस अदर स्टफ्स. ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने बोला कि प्रोफेशनल मार्किंग्स आपको मिलेंगे 4 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स आर 50. तो स्टूडेंट जस्ट इमेजिन, बाय रीडिंग दिस स्टफ हमें काफी कुछ पता चल गया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है. नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले हम डायरेक्टली रीड करते हैं क्वेश्चन. गाइस, क्वेश्चन रीड करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ऑब्वियसली वी विल टेक टाइम, बिकॉज यू नो व्हाट गड़बड़ होता है APM पेपर में स्टूडेंट्स कि हम क्वेश्चन समझ नहीं पाते. वी नो द आंसर बट वी मिस इंटरप्रेटेड एंड हम गलत आंसर लिख के आते हैं. पूछा कुछ और है, हम अपना नॉलेज कुछ और प्रेजेंट करके आते हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज वी डोंट हैव एन ऑप्शन टू लाइक
अपने मार्क्स गंवाने का ऑप्शन नहीं है। यस, सो चलो अभी कुछ ज्यादा मैं डिले नहीं करूंगी, विल जस्ट स्टार्ट इट। ओके, द फर्स्ट, दिस क्वेश्चन इज कंपल्सरी एंड वी नो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज कंपल्सरी। सो हम कौन है? अच्छा, वी आर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ माय कंपनी एट क्राउन ओक कंस्ट्रक्शन। सो आई विल से इट इज सीओ। ओके, क्राउन ओक, ठीक है, दिस इज माय कंपनी एंड यू हैव बीन वर्किंग विद द डायरेक्टर्स, जहाँ पे काफी सारे इश्यूज आए हैं, तो आपको उनको रिपोर्ट करना है। तो ठीक है, हम कर देंगे उनको रिपोर्ट। अब आपको पता है कि कभी भी कंपनी का दिया रहता है फर्स्ट एग्जिबिट, इट इज कंपनी का इंफॉर्मेशन, या क्या वो सोचती है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, सब कुछ। सो कंपनी का स्टोरी बैकग्राउंड। ओके, एंड पीपल इनको रीड करने में गड़बड़ कर जाता है, वो लोग ये ना फटाफट रीड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इफ यू अंडरस्टैंड द कंपनी का इंफॉर्मेशन, आपको वो फ्लो हो जाएगा कि जैसे एज इफ दिस इज योर कंपनी, यू आर पोजेसिंग इट, यू आर द अकाउंटेंट। अगर आप इनको अपनी कंपनी के जैसा मानोगे ना स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू कि आप आंसर्स को प्रिटी परफेक्ट एनालाइज कर पाओगे, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। ओके, सो या लेट्स रीड इट फर्स्ट। So my company, Chrono Construction, is a well-established listed company. Okay, so my company is well-established, means अच्छी company है. Okay, based in the Western European country. Okay, it specializes its construction of timber-framed buildings such as barns, garages, carports, etc., which are built in order. Means अगर आप देखा हो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारी कंपनी काफी रिप्यूटेड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, एंड हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, यू रिक्वायर टिम्बर। सो वो टिम्बर्स भी बहुत अच्छे क्वालिटी का यूज करते हैं एंड दे मेक द बिल्डिंग के फ्रेम्स जैसे जैसे उनको ऑर्डर आया, अ बिल्ट इन ऑर्डर, अबाउट बार्न्स, गैराजेस एंड कारपोर्ट्स। ओके, दिस इज व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, ट्रेडिशनली पुराने जमाने में क्या हुआ था, मेरी जो कंपनी है हैज ऑलवेज बीन यूज्ड टिम्बर सोर्स फ्रॉम इट्स ओन कंट्री एंड इट प्राइड्स इटसेल्फ ऑफ ओनली यूजिंग फ्रॉम द सस्टेनेबल रिसोर्सेज। मीन्स हम जो टिम्बर, जो लकड़ा यूज कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का है अलॉन्ग विद द सोर्सेस, सस्टेनेबल सोर्सेस। मीन्स हम एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं कर रहे हैं एंड अच्छी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज गुड, इजंट इट? और कंपनी का मिशन क्या था? मिशन, क्योंकि आपको पता है जब अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक मिशन स्टेटमेंट करके भी डालते हैं कि भाई ये मेरी आज कंपनी है, मैं अपने आप को यहाँ पे देखना चाहती हूँ 5 साल के बाद, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दे ऑफ विलिंगनेस, दे जस्ट शो इट दैट वे। So my company's mission statement shows that to create a value for our own shareholders through constructing the high quality, cost effective, sustainable produce. ठीक है, ये उनका मिशन था कि वो अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे जो। Now students, this becomes very important. This becomes the most important point. ये आपको पता चलेगा कि क्यों important है. Okay, yeah, we'll read it first and then we'll go ahead. Okay, अब कोई भी कंपनी होती है, उनको खाली प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, वो चाहते हैं कि उनके नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी अच्छे हो, जैसे कि कस्टमर्स आर हैप्पी, पीपल उनसे परचेस करें, क्वालिटी अच्छी हो, सब कुछ ठीक है। सो द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस हैज ऑलवेज बीन अ मॉडल, ये भी उनको ध्यान पे रखना था। ओके, द बोर्ड हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स फॉर द बिजनेस। तो कंपनी के लिए व्हाट आर द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स? तो उनको क्या लगा पता है, कोई भी कंपनी का सक्सेस होने के लिए उनको लगता है कि भाई मेरे कस्टमर्स हैप्पी होने चाहिए, मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा होना चाहिए, और बहुत मतलब मेरी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। So what was their success factors? To improve the productivity, okay, by using some edge construction techniques, मुझे maximize करना है मेरा profit with the low level of risk and to maintain the customer satisfaction by giving them superb services. So all this stuff is just मेरी कंपनी का बैकग्राउंड, तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया। अब the first thing about the competitive advantages and the competitive environment. So अगर आपको याद हो, हमारे क्वेश्चन में हमने कहीं पे तो बेंचमार्क देखा था। So definitely मेरा एक कंपनी है Coke own and Crown own and another company is Henderson. तो मे बी इन दोनों के परफॉर्मेंसेस को उन्होंने मेजर करने बोला है। तो ये स्टोरी पढ़ने से पहले आई टेल यू इट्स लाइक दैट वे कि मेरी कंपनी है और दूसरी कंपनी है हेंडरसन, हम बहुत पुराने कस्टमर, बहुत पुराने कॉम्पिटिटर्स हैं, मीन्स हम बहुत पहले से है, तो हम लोग का सब नॉर्मल चल भी रहा है। ओके, उनका भी जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर्ड है, मेरा भी एक्सेट्रा। अब क्या हुआ, एक न्यू कंपनी आ गई, ये तो नई कंपनी है, या न्यू कंपनी प्रोटिम आ गई, और वो क्या करती पता है, वो चीप क्वालिटी की, मींस चीप प्राइसेस पे लो क्वालिटी की कुछ प्री असेंबल्ड बिल्डिंग बना रही है।
जिसकी वजह से जो पीपल बहुत प्राइस सेंसिटिव है, जिनको फर्क बहुत पड़ता है अरे यार प्राइसेस से, सो वो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली मेरी जो कंपनी है उसका सेल्स भी कम हो जाएगा। हाँ मैम, पक्की बात। डेफिनेटली ये इम्पैक्ट होगा मेरे कंपटीटर्स पे। यस, सो दैट इज अ प्री असेंबल थिंग। तो अब मैंने क्या सोचा था पता है, मेरी कंपनी ने कि जो पहले मैं कर रही हूँ वो करती हूँ, पर अब मैं इसमें भी घुस जाती हूँ। सो आई डू लाइक दैट, प्रो टीम जैसे भी मैं काम करती हूँ। So that is something changed. So yeah, let's just read it. Okay. Historically, my company Kronog and Henderson Construction has been the two main important companies in the market. These are the two important companies. But अब क्या हुआ? But recently, a new competitor, ProTim आ गया. New competitor, ProTim has entered into the market. अब ये ProTim क्या कर रहा है? ProTim is another European country and it makes a pre-packaged timber which is more quicker and actually थोड़ा cheaper भी है because it does not uses all the resources from sustainable source. अच्छा, अब क्या हुआ? मुझे तो टेंशन हो गया ना कि नया कॉम्पिटिटर आ गया। सो इन रिस्पॉन्स अब मेरी कंपनी ने क्या किया? इन रिस्पॉन्स ऑफ द थ्रेट फ्रॉम प्रोटिम, माय कंपनीज डायरेक्टर ने क्या सोचा? हैज डिसाइडेड टू मूव टू द बिल्डिंग ऑफ प्री असेंबल वुडन स्ट्रक्चर। सेम जैसे कि पहले क्या करते थे कि वो ऑर्डर्स पे जाते थे कि अच्छा सा कुछ टिम्बर यूज करके जितना बिल्डिंग ऑर्डर आया तो उतने वो लोग कंस्ट्रक्ट करते थे। अब उन्होंने सोचा व्हाई नॉट टू डू द सेम वर्क जैसे कि प्रोटिम करता है। ओके, तो प्री असेंबल्ड बिल्डिंग्स आर चीपर देन क्रोन ओक्स खुद की बिल्ड टू ऑर्डर्स। ओके, ये मतलब ये चीपर है एंड डायरेक्टर को ऐसा लग रहा है कि वो चीपर रेट्स बुक करेंगे बिकॉज इंटरेस्ट रेट मार्केट में बहुत बढ़ रहा है। तो मे बी पीपल्स परचेसिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो शायद अगर मेरे प्राइसेस कम है तो पीपल मुझसे परचेस कर लेंगे ऐसा। ओके, so pre-assembled buildings are cheaper than my company's current built-to-order units, and the director believes that there is a need of cheaper products as the rate of interest has recently started rising again. ठीक है, ऐसा हुआ है, and a move which some analysts believe could be गलत also, would be fragile economic recovery. Let's see what happens now. Now, if you read it, the move into this new market will involve considerable investments. अगर आप कोई भी न्यू बिजनेस करना चाहते हो तो यू नीड टू हैव सम एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ न्यू इसमें करना है तो शायद आई रिक्वायर प्लांट एंड मशीनरी। तो क्या हुआ? और काफी सारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में उनके एसेट्स रुक गए। ओके, दे आर फंडेड ब्लॉक्ड। तो द मूव इनटू द न्यू मार्केट विल इन्वॉल्व मेरी कंपनी क्रोम ओके कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स, कंसीडर द इन्वेस्टमेंट्स इनटू न्यू नॉन करंट एसेट्स एंड विल लीड टू एडिशनल लेबर कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। यस, My company has already begun to purchase the new equipment also. अच्छा, मेरी कंपनी ने तो चालू भी कर दिया परचेस करना। As this is a growing market, तो डायरेक्टर्स को क्या लगा पता है? डायरेक्टर्स को लगा देखो ये जो प्रो टीम से काम कर रही है ना वो बहुत आज के डेट में ठीक है, कल बहुत हाइक होने वाला है। तो जो मेरे खर्चे हैं वो मेरे इन्वेस्टमेंट्स ही है, क्योंकि लॉन्गर रन में मैं उसे कमा लूंगी ऐसे। तो दिस इज व्हाट द पीपल थॉट। चलो आगे व्हाट हैपेंड? By contrast, the directors of my company have decided to concentrate. अच्छा, my company no Henderson company means अगर आप नाम पढ़ो students, yes students, there is Kronok which is my company, Henderson company which is a competitor company. Henderson and Kronok same company से पहले से same, but Pro Team के आने की वजह से हमने Kronok ने सोचा कि why not to change the strategy, या वो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहता है। बट हेंडरसन ने बोला कि नो नो, हम जो काम कर रहे हैं पहले से हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, छोटे इंप्रूवमेंट्स करके हम लॉन्ग टर्म में पर्सपेक्टिव अर्न कर लेंगे। ऐसा सोचा किसने? हेंडरसन ने। ओके, बाय कॉन्ट्रास्ट द डायरेक्टर्स ऑफ हेंडरसन हैव डिसाइडेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मेंटेनिंग द करंट मार्केट शेयर एंड उनके कोई भी प्लान्स नहीं है टू ग्रो बाय डेवलपिंग न्यू मार्केट्स, नहीं। हाउएवर द कंपनी कंटिन्यूज टू मॉनिटर इट्स कॉस्ट कॉन्स्टेंटली, मतलब उनको कॉस्ट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है ताकि लॉन्ग रन में वो इंप्रूव कर जाए अपनी एफिशिएंसी। ओके, सो ऑल दिस स्टफ इज गिवन अबाउट द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ओके, थर्ड, अब मुझे परफॉर्मेंस भी तो रिपोर्ट करनी है क्योंकि मुझे केपीआईज एंड एवरीथिंग इज देयर, बेंचमार्किंग के लिए भी मुझे कंपेयर करना है। सो कुछ अपेंडिक्स दिया होगा फॉर श्योर। सो लेट्स रीड इट। द मंथली रिपोर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय the monthly reports produced for the board of directors include a summary information and KPIs। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था, ये KPIs ना किसी पुराने फाइनेंस डायरेक्टर ने बना के रखा था।
अब जो फाइनेंस डायरेक्टर बहुत ओल्ड एज से था हमारी कंपनी में, अब वो रिटायर हो रहा है या फिर जा रहा है और कोई न्यू फाइनेंस डायरेक्टर आ रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैम ये केपीआईज ना बहुत पुराने हैं, हमें कुछ और केपीआईज को भी ऐड करना पड़ेगा. Let's see it. Now, the monthly reports produced for the board of directors include a summary. The assistant accountant has already been correctly calculated the KPIs for the figure. और उन्होंने बोला कि प्लीज सब कुछ अपेंडिक्स 1 में चेक कर लो. ठीक है, विल डू इट. द करंट KPIs जो हमें को दिया हुआ है, द करंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स was selected by previous finance director who had been working in the company for बहुत सारे years and have retired. However, जो new FD था, new finance director, who was recruited from another construction company only, अब उसको क्या लगा कि कुछ change करना पड़ेगा. So what he thought like is concerned that ये जो क्रोनो कंपनी है is not paying sufficient attention to the market share and cost control. So the company का जो finance director है, he thought that now this company ना क्रोनो is not paying care, is not concentrating on what market share and cost control. So maybe उसको लग रहा है कि कुछ changes की जरूरत है. So he has suggested that Chrono's KPI should be updated. Okay. Although there is a little enthusiasm और दूसरे members करना नहीं चाहते हैं, उनको लग रहा है कि अरे जो जितने साल से हो रहा था काम सब सही ही था. So मेरा जो finance director है new, उसको कुछ help चाहिए हमसे. We'll do it. So my finance director wants a view on the two important aspects. That is, first, he wants हमारे thoughts on how the KPIs will be good with CSF. You remember this is the first question. How will the KPIs fit with the CSFs? Yes? Yeah. He has asked you to take each CSF in turn and evaluate how the current KPIs fit them. Second, he wants us to evaluate that कि जो CFS है क्या वो reflect करते हैं competitive pressure. Now these are the two questions if you remember. Yes? So इनके बारे में मुझे लिखना पड़ेगा and उसके लिए I have to go ahead with appendix 1. Okay. We'll go to appendix 1 for sure. But उसके पहले there is some other thing also in the appendix 2 they have asked us considering the appendix 2. Okay, let's read it first. ये तो बात किसने? फाइनेंस डायरेक्टर ने. अब ऑपरेटिंग डायरेक्टर भी आएगा, अब वो भी कुछ बोलेगा. व्हाट डिड ऑपरेटिंग डायरेक्टर डू? ऑपरेटिंग डायरेक्टर जो डेली ऑपरेट कर रहा है मींस उसको क्या कंसर्न होगा पता है कि सेल्स कितनी बढ़ी, परचेस कितनी बढ़ी, एटसेट्रा एटसेट्रा. मे बी आपके यूनिट्स कितने कम हुए, कितने ज्यादा हुए, दैट वे. The operating director has raised the concern about the validity of the budgeted figures for the last year. उसको बजट से कुछ मतलब है. Yes. Okay. My operating director, he is concerned that the performances of the budget is worst. अच्छा, मतलब पिछले साल से उनके बजट तो बहुत ही खराब. बट उसने पॉइंट क्या किया है पता है कि आप जब बजट बना रहे हो ना तब आपने ना ये कंसिडर नहीं किया. मींस he pointed that the budget are not anticipated the new market entrant. अच्छा, एंड आपने अच्छे से इसको रिफ्लेक्ट भी नहीं किया है. ओके, सो बजट्स में ही गड़बड़ी है ऐसा उनको लग रहा है. सो व्हाट हैपेंड इन पर्टिकुलर द नंबर ऑफ कस्टमर्स. नाउ दिस इज अ सिग्निफिकेंट इशू. जब उन्होंने अपेंडिक्स 2 देखा तो उनको पता चला दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स अंडरटेकिंग बार्न कन्वर्जन. यू रिमेंबर व्हाट्स बार्न? हमने क्वेश्चन में देखा था फर्स्ट लाइन. व्हाट इज द कंपनी प्रिपेयरिंग? द कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग इनटू बार्न्स, गैरेजेस एंड एयरपोर्ट्स. अच्छा, तो जो कस्टमर बार्न्स परचेस करते थे वो शायद बहुत रिड्यूस हो गए हैं. व्हाई? देखते हैं. In particular, the number of customers undertaking the barn conversion has significantly reduced, has fallen down because prices बहुत बढ़ गए हैं, increased rate, जिसकी वजह से कस्टमर को ये परचेस करने के लिए लोन वोन लेना पड़ेगा. Okay. So the operating director is also concerned about the increase in the number of jobs. Okay, तो उनको क्या लग रहा है कि जो जॉब ओन्स कर रहे हैं जहाँ पे क्रोन ओक है वो ज्यादा खर्चे होंगे. उसको बोलते हैं रेमेडियल वर्क आफ्टर इनिशियल कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड. ओके, तो उसको बहुत टेंशन है कि अभी ये भी खर्चा हो जाएगा. ओके, कूल. Okay. He is concerned that the current performances is different or it's difficult to distinguish between ये दो cost. What is construction cost and what is remedial cost? So the company is a construction company. तो उनके maximum cost होते हैं construction cost. And अगर उसको कुछ problem है तो उसको सही करना है, उसको बोलते हैं remedial cost. So the operating director is very much concerned कि कौन से cost को हम emphasize करें. That's it. Okay. Consequently, he thinks that the true costs of quality are actually higher than those shown in the summary financial statements. ठीक है. Oh, it's just a question. Just imagine students. But आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है slowly.
अब थोड़े से टॉपिक ऑफ टीक्यूएम भी दिए थे, क्वेश्चन था टीक्यूएम का, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. As such, he has suggested that my company would benefit from introducing the TQM. अच्छा, वो कुछ बेनिफिट करेंगे अगर वो TQM को लाएंगे कॉन्सेप्ट में. ओके, अप्रोच टू मैनेज द रिसोर्सेज एंड द प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंपनी. ठीक है, he has asked us a help in explaining कि भाई क्या बेनिफिट्स है, हम बता देंगे उनको. अब उन्होंने कुछ बेंचमार्किंग की बात की, तो हम अपने फाइनेंशियल्स और वो हेंडरसन के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करेंगे. सो द फाइनेंस डायरेक्टर वांट्स टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट in the next board meeting looking at my performances in the last year as well as the performances issues. He has also asked you कि please help and draft a report for the comparison. And comparison कैसा करेंगे? The comparison of Chrono's performances with Henderson, okay, is something which has been included in the summary. और उसके लिए मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? I have to understand for that the appendix 1. Okay, something about bonus भी दिया है. Again, a question था long term benefits. Yeah. So my company operates a bonus scheme for its management and staff. However, in order to be eligible for bonus in any years, company के अगर profits अच्छे हैं तो उनको मिलेगा. The company's actual profit before interest and tax must be above the budget. But as a profit of 31st March 2025, अब below budget bonus paid नहीं होगा. बट फिर भी रेम्यूनरेशन कमेटी को लग रहा है कि बोनस स्कीम देना चाहिए, इज कंसीडरिंग इंट्रोड्यूसिंग अ लॉन्ग टर्म बोनस प्लान्स. द फाइनेंस डायरेक्टर को मेरे से हेल्प चाहिए कि उसके बेनिफिट्स क्या है. So students, very simple. This is the question. This is the summary. This is the summary. अब हम रीड करेंगे appendix 1 and appendix 2. Yeah, easy. Students, for answering the key performance indicators, just give me 1 minute. मैं इसको थोड़ा सा बिग कर देती हूँ. Okay. Key performance indicators for that it's in appendix 1 which we have to refer it. उसमें हमारी कंपनी के एक्चुअल दिया है, हेंडरसन कंपनी के एक्चुअल है एंड हमारी कंपनी के बजट्स भी हैं. सो इफ आई सी द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, अगर मैं कंपेयर करूंगी हेंडरसन से हमारे एक्चुअल, सो या हेंडरसन इज बेटर. Budget was more, I made it less. Gross profit, I can compare it. For that, there is some note to average selling price. Contribution per unit means sales minus the variable cost. क्वालिटी पे खर्चा कितना लगा? मैंने सोचा कि 195 लगेगा, बट हमने ज्यादा करा. ओके, मे बी. देन रेशियो ऑफ फिक्स्ड टू वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन. परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना मिलना चाहिए था? तो माय कंपनी थॉट ऑफ हैविंग अ कैपिटल एम्प्लॉयड 13.3%, बट मुझे बहुत कम मिला, ओनली 4.5, which is very less as compared to my Henderson company. And this is a satisfaction level, means customer score, review, ratings. मुझे लगा 4 रेटिंग मिलेगा, बट मुझे 3.5 मिला. And ऐसा कुछ भी ratings are not applicable for Henderson company. Feedback नहीं लेते. Now a lot of info is given. Yeah, if you can read the question. Yeah, a lot of information is given. See, first आपको ये चेक करना है, आपको एक क्वेश्चन याद था कि न्यू कंपनी आने की वजह से कुछ शेयर्स में चेंज आ गई, क्योंकि पहले खाली मैं ही काम करती थी, अब काफी और भी कंपनीज है वही चीज सेल करते हैं. तो पहले जो आपने मार्केट 80% कैप्चर कर रखा था, मे बी आज आपका उतना नहीं हो, या ज्यादा भी हो कम भी हो. So what they have given, the total market of the timbered framed buildings in the year end on 31st March 2025, this is my current year, was 1670. So basically it's 1670. Previous year में था 1585. एंड हमारा उसमें कितना शेयर है करंट ईयर में? वो 439 एंड प्रीवियस ईयर में था 434. So we can get the percentage. Okay. Second, जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया है इन दिस क्वेश्चन व्हिच इज देयर, ग्रॉस प्रॉफिट, या सो मैंने सोचा था नीड टू बी 30.5%, बट है ओनली 23. सो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, द ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट. या वी नो दिस कॉन्सेप्ट, sales minus variable cost for raw material, temporary visits, contract, subcontract, quality costs, etc. All other costs, including permanent head office and all are fixed. So उन्होंने क्या बोला है students? Try to understand it. मेरे कंपनी के एवरेज पीपल आई थॉट वाज 2200, तो मैंने उनको को सैलरी दी होगी, जबकि मेरा बजट था ओनली 2000. बाकी if I compared it with the Henderson, they were having actually staff of 2500. Okay.
So maybe that could be useful. Third, सेटिस्फेक्शन लेवल बोला है उन्होंने कि भाई एट द एंड ऑफ एवरी जॉब वो लोग शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट्स योर रेटिंग्स। 5 मतलब बहुत हैप्पी है, 1 मतलब बहुत हैप्पी नहीं है। ओके एंड दिस इज द लास्ट अपेंडिक्स व्हिच इज प्रेजेंटेड, व्हिच इज आल्सो वेरी सिंपल। तो अगर आपको याद होगा ये ऑपरेशनल डायरेक्टर को चाहिए था, जिसको डे टू डे से मतलब है, बजट्स बनाया है एक्चुअल में। सो दीस आर द बजट्स। अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला था कि जो बान है ना, BARN बान, वो बहुत एक्सपेंसिव है, सो पीपल आर नॉट परचेजिंग दैट, सो उसकी भी डिमांड कम हो गई। सो बान्स आई एस्टिमेटेड 6.70, बट ओरिजिनली कम हुआ। और यहाँ पे गैराजेस का ज्यादा हो गया एक्चुअली, कारपोर्ट्स का भी ज्यादा हो गया, अदर्स का कम हो गया। ओके, सो मे बी दैट इज अ थिंग। सो एक्चुअल प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट रिमेन इन द लाइन विद द बजट, सो एक्चुअल प्राइसेस आर सेम। सो ये जो प्राइसेस है ना वो सेम है। ओके कूल। So students, we have just completed the reading of the question and I am pretending कि आपको question समझ में आया है। Are my assumptions correct? Did you understood the question? Yes. समझ में आया students question? Yes. Just हम लेते हैं 2 minutes का breather and yeah, we'll start with the solution.
So yes students, now we are supposed to formulate the answer for it. Okay, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रीड करना अगेन. ओके, सो क्या उन्होंने पूछा क्या है हमें, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके ओके ओके, सो इज द फर्स्ट क्वेश्चन. यस, draft a report, and that is for 13 marks. Okay, the first question: draft a report for board of my company which responses to the instruction. So first मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मुझे रिपोर्ट लिखना है. तो who am I am the accountant like as such, एंड मुझे ये रिपोर्ट लिखना है, एंड उसके अंदर मुझे काफी सारे इश्यूज बताने हैं. तो कंपनी में कितने इश्यूज हैं रिगार्डिंग ऑल दोस फैक्टर्स आपको रिप्लाई करना पड़ेगा. okay, जितने भी क्वेश्चंस हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट formulating the answer. Okay, I'm just putting it up over here, the solution. Yeah, this is how we are going to write it in the answer. And students, I want this way कि अगर आपने ऐसे इस तरीके से आंसर लिखा तो definitely we are going to get very 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 good marks. Okay, so yeah, just without any further delay हम आंसर्स को चेक कर लेते हैं कि हमें लिखना कैसे है. सो द फर्स्ट, हमें ना स्टूडेंट्स रिपोर्ट करना है. तो अगर हमें रिपोर्ट करना है तो हमें टू एंड फ्रॉम एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट इट. ओके, सो फर्स्ट माय रिपोर्ट शुड हैव टू whom should I report. सो क्वेश्चन में था we have to report it to the board. who am I am the accountant over here, and आज की डेट लिखना है, एंड कौन से इश्यूज के लिए we are going to report it, that is something which we have to write it. Okay, so this is how we are going to start it. So it's the report to the board of a company from the finance director and आज की डेट and certain performance management issues. So कौन से issues थे जो आपको इंट्रोडक्शन में सारा कुछ लिखना है. what are the questions. ये स्टूडेंट्स आपने ये लर्न कर लो, like whatever the question is given regarding suppose मुझे उन्होंने बोला है कि current CSF and KPIs के बारे में बताओ, some benchmarking concepts, some TQM, so everything you have to just precise it and write. जो भी question है प्लीज उसको फॉर्मुलेट करके शो कर दो. Like to report evaluates the effectiveness of my company's KPIs and CSFs. Yes. Then relating to competitive environment. Yes. Then the potential benefits of TQM. Yes. Then the benefits of benchmarking. Yes. And the potential issues for that short-term and long-term companies. Easy. So this is the first answer. Means the first introductory para is nothing other than आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा है ना, जो भी क्वेश्चन में पूछा है, like 5 points, 6 points, everything you have to just write it. Just give me a minute. I'll just confirm it whether we are live or not. So yes, I think we are live. Yeah, it's going on. Yeah. Yeah, I just need to check it because over here I'm getting it will resume so early. Yeah. So after introduction, students, अब ना आपको individual questions के individual answers देना है. So what's the first thing they have asked us about के value of the reporting बताओ between the CSFs and KPIs. अगर आपको question याद होगा. First question was what? Just try to recollect the question. Okay. First, evaluate the fit between what? Evaluate the fit between the KPIs and CSFs. उसके बाद है about the competitive pressure. Okay, so current KPIs and CSFs. So yeah, this is my first answer जो मुझे लिखना है the way. In the exam also so आप ऐसे कर सकते, ठीक है. And उसके अंदर ना students, there is a value of performance report. So what I will write it? Value of performance report between CSFs and KPIs. So check करो कि कौन सी यूनिट ज्यादा सोल्ड है about reporting. So students, सबसे पहले आप चेक करो ये units. Okay, if you check on the budget 2 over here, what do I get?
मैंने सोचा था व्हाट आई थॉट वाज कि ओके आई कैन मेक अ सेल ऑफ दिस मच यूनिट अबाउट द प्रोडक्टिविटी. याद है आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में बताना था, बट एक्चुअली आई वाज एबल टू जस्ट सेल दिस मच यूनिट्स ओनली. So please get the total. What is the percentage below budget you are? So take the actual and get the sold one and उसका difference लेके percentage से divide करो. Do you get something like 22%? So आपने जितना बजट बनाया था उससे आपने 22% लेस सेल किया है. Yes. Whereas अगर कार पोर्ट्स की बात करें तो आपने कुछ ज्यादा सेल किया है. How much percentage more you would have sold? Like nearly 5% more. So जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, बिकॉज इफ यू रिमेंबर उन्होंने क्वेश्चन में मुझे पूछा था कि टॉक अबाउट द करंट CSFs. या सो मैंने एक येलो करके रखा था, लाइक डार्क कलर किया था, दैट इज फिट बिटवीन करंट KPIs एंड CSF. तो हमारे पास ऐसे 3 क्वेश्चंस थे, 3. If you want, I can just copy and paste it over here. We identified CSFs first. Let me copy it and paste it to the down answer. फिर हम उसके लिए related one by one answers करेंगे. Okay. First, over here is this. That is, first is to improve the productivity. अगर productivity की बात करें तो students productivity means number of units. So हमने number of units को भी compare कर सकते हैं, right? So we have to write the over here the improved productivity is because of I want to like increase in the numbers, but there are several limitations also. So improve productivity by using the leading edge techniques. So unit sold का क्या था? The number of units sold monthly are given because आपको ये भी पता है कि changes आए हैं कुछ. पहले they were making build to order, जितने orders आएंगे उतने बनाएंगे. अब उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, it's better है कि अभी हम units को क्या करें, सेल ही कर दे वैसे. Build for each units. Okay, these are the number of units. So however we have to like find it out the number of कितने उनके demands है and कितने कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं. So students, this is what we are getting it as per the performances. Several factors. Means हमने सोचा for example as per appendix 2, I thought my number of bands बढ़ेगा, but actually it went off less. So it is reduced by how much? 22% से ये कम हो गया. And if you check on for the car ports, it has been increased over budget of 5%. Yes students, so all this stuff आपको लिखना पड़ेगा because it shows something about the productivity. Yeah, productivity. Correct. उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता है that there was a question that shows कि अगर आपने न्यू फेज में एंटर किया तो there will be some cost like remedial cost. प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपने कुछ न्यू इक्विपमेंट्स में भी एंटर किया है. So even that is a cost which can hit. So yeah, that can also be the situation because initially वो कंपनी क्या करती थी, yeah they were entering into the stuff जिसमें वो लोग पहले like old ages में ना वो लोग built करते थे, built in. Now they are entering into the pre-assembled things. Okay, so that is also a difference. So if the number of units built is compared to the number of employees, this could be a productive staff are, how productive the staffs are. So ये भी impact हो सकता है क्योंकि मुझे new machines, new equipments, everything I want. So lower the revenue will be situated than the budget along higher the budgeted staff. क्योंकि जितने ज्यादा एम्प्लॉइज उतना मेरा कॉस्ट ज्यादा, उतनी मेरी प्रॉफिट कम. So even that can be an impact. Even that can be an impact on profits. Yes. So this is the way I write it for my first answer. अब next अगर आपको याद होगा उन्होंने कुछ और बोला है to find out. Okay, first is done. They have asked us to please show to maximize the profit with the acceptable level. If I want to see the maximize the profit, what is the chance of getting a profit? अब अगर आपको प्रॉफिट कंपेयर करना है तो मे बी मुझे कुछ रेशियोज कंपेयर करने पड़ेंगे. ओके, फॉर दैट मे बी कैन आई गो टू अपेंडिक्स? यस. ओके, इफ आई गो टू अपेंडिक्स, am I getting anything which is known as gross profit percentage? Yes ma'am. Am I getting anything like contribution? ये भी प्रॉफिट का पार्ट है. yes. Am I getting कुछ कॉस्ट? हाँ मैम. Am I getting capital employed? So individually ना स्टूडेंट्स मुझे इसको रिप्लाई करना है. फॉर दिस देयर इज अ नोट 2. मीन्स आई फील लाइक कि मेरे बजट के कंपैरिजन में मेरे एक्चुअल प्रॉफिट्स इतने अच्छे नहीं है. पर क्यों नहीं है? उन्होंने बोला है क्योंकि इसमें ये सब इंक्लूड हो रहा है. क्योंकि हमने क्या सोचा था, इनिशियली बजट बनाया है 2000 एम्प्लॉइज का, बट एक्चुअली खर्चा ज्यादा है तो मेरे प्रॉफिट्स इतने नहीं है एंड कंपेयर टू हेंडरसन. ओके चलो ये सब दिया है. सो वी हैव टू कंप्लीटली राइट इट कि अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट भी कैन बी अ रीजन. ओके, जीपी रेशियो कैन ऑल्सो बी अ रीजन. So to maximize the profit, I understand first is the GP ratio. So it is possible that the gross profit margin obtained
ऑन ईच बिल्डिंग कुड प्रोवाइड एन इंडिकेशन कि इतनी एफिशिएंट कंपनी है, ठीक है। अगेन हाउएवर देयर आर पोटेंशियल लिमिटेशंस आल्सो, जैसे कि मुझे मार्जिन को यूज करना है फॉर प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द रॉ मटेरियल का कॉस्ट आल्सो। मींस जो फिक्स्ड है ना गाइस, जो फिक्स्ड है ना वो तो फिक्स्ड ही है, जैसे कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है, लेबर का कॉस्ट क्या है, वो पक्का लगना है तो वो लगना है। बट कुछ कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट कैन बी कंट्रोल इफ आई वांट मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। ओके, ऑल्सो इट इज नॉट क्लियर लाइक जो क्वालिटी कॉस्ट लगा था ना वो भी कैसा था, एंड हमारे पास तो स्टाफ्स भी ज्यादा है, सो इवन दैट कैन बी इम्पैक्टेड कि हमारे इतने प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। Along with that, if you see the maximizing the profit with acceptable risk, so क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँ, परसेंटेज। सो व्हाट इट इज गाइस, परसेंटेज। अगर आपने की फैक्टर के लिए देखा केपीआईज में, इंक्लूडिंग ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज एज अ केपीआई, फोकस इज ऑन प्रॉफिट्स। अगेन द सिंगल फिगर ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं तो एक सिंगल फिगर इनफ नहीं है टू शो, बट मुझे पता चल सकता है बाय कंपेयरिंग इट। सेकेंड, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो वहां पे मुझे था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मींस व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स माइनस मींस रेवेन्यू माइनस ऑल द वेरिएबल कॉस्ट। आपको जितना बच गया उसमें आप ना स्टूडेंट्स फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते, तो अगर किसी कंपनी का कंट्रीब्यूशन इज मोर या तो दैट शोज कि भाई अच्छी इंडिकेशन है, दैट्स गुड इंडिकेशन। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेज ऑल्दो दिस इंडिकेटर प्रोवाइड्स मॉनेटरी वैल्यू, यस इट इज नॉट अ परसेंटेज। आपको सीपीयू मिलता है, कॉस्ट सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स मिलता है, रुपी या डॉलर। इट प्रोवाइड्स अ लिटिल इंफॉर्मेशन कि भाई क्या हेल्प हो सकता है। द वे द कंपनीज फिगर्स आर रिपोर्टेड मींस द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द कंट्रीब्यूशन आर द सेम थिंग। हाउ, अगर आप चेक करो दोनों को भी इन द अपेंडिक्स, या प्लीज चेक इट। My GP ratio I budgeted was 30%, okay, 30.05. Actual was 23.2, means बहुत कम हो गया. Same way when you see the contribution, मैंने सोचा था कि I'll get a more contribution, but eventually my contribution is also less. So भाई दोनों भी negative ही है. Clear? Okay. So this is also something which I have supposed to write it. Okay. Up next. खाली इतना ही था क्या मैम, हमारे पास ROCE भी है, मींस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मींस आप कितना मनी अर्न करोगे बाय लाइक डिप्लॉइंग इतने इक्विटी या इतने कुछ भी, तो उनके सामने उनको क्या मिलेगा, दैट वे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। द कंपनी हैविंग मोर ROCE शोज कि भाई आपकी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, आप इतने केपेबल हो कि आप उनको दे सको मनी, दैट शोज। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मींस इट shows how effective the company is by using its capital to generate the profits. Yes. As such, these KPIs should also encourage कि आप कैसे तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सको। कॉन्सेंट्रेट करो कि शॉर्ट टर्म डिसीजंस ऐसे ना लो कि जिससे आपके प्रॉफिट्स पे डिफरेंसेस आए, राइट। सो टेक अ प्रॉपर डिसीजन, जैसे कि इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन, इफ यू कैन रीड दिस, माय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड oh my god was 13.5, but eventually आपने खाली 4.5% ऑन किया, वेरी वेरी लेस, कंपैरेटिवली बहुत कम, बहुत ज्यादा ही कम। ओके, दिस कैन बी अ सिचुएशन। अब नेक्स्ट आपके पास एक और कॉन्सेप्ट था, एक और पॉइंट था, अगर आपको याद होगा तो। सो वी डिड द फर्स्ट टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी, यस मैम, अब हमने मैक्सिमाइज भी कर लिया प्रॉफिट। नाउ टू मेंटेन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा कि हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा था कि अगर मुझे देखना है कि हाउ सफिशिएंट, हाउ सेटिस्फाइड माय कस्टमर इज, तो मैं उनको बोलती हूँ कि चलो मुझे रेटिंग्स दे दो। तो या कहाँ पे तो मेरे पास है दैट कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन स्कोर। अगर मेरा स्कोर इज गुड, दैट शोज कि माय क्वालिटी विल बी बेटर, माय कस्टमर विल बी हैप्पी। अगर स्कोर कम है तो आई हैव टू वर्क ऑन दैट फेज आल्सो। तो या हम उसको भी रिप्लाई करेंगे। यस, आई जस्ट copied it and pasted it over here. So for that students, अगर आपने याद रखा होगा क्वेश्चन में, अगर आपने पढ़ा था तो आपको याद आएगा कि कस्टमर कितने सेटिस्फाइड थे। Yeah, so that shows customer satisfaction score. The customer satisfaction score obtains by the customer survey किया मैंने, तो मुझे पता चला कि वो कितने हैप्पी है। I can compare it with the comparatives also, previous या current year की। Along with that मैं उनसे पूछ भी सकती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। If the question you see, you expected a score of 4, but आपको मिल रहा है 3.5, it is फिर भी ठीक है, बट ऐसा कुछ हेंडरसन में है ही नहीं, इट्स ओके।
सो हमने ये भी कंपेयर कर लिया मैम, ये भी कंपेयर कर लिया, बट व्हाट अबाउट दिस क्वालिटी कॉस्ट? अच्छा, कस्टमर्स को हैप्पी रखने के लिए और टू अचीव द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स आपको क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आपने सोचा पहले कि क्वालिटी पे खर्चा लगेगा 190 पे, बट बाद में पता चला कि क्वालिटी पे कॉस्ट इज वेरी मच। सो इफ इट इज अ प्रिवेंशन कॉस्ट अच्छी बात है, बट ऐसा कुछ दिया नहीं है कि ये प्रिवेंशन कॉस्ट है। तो शायद ऐसा हो रहा होगा कि आपकी स्क्रैप से ज्यादा निकल के आ रहे हैं, कि उसको मेंटेन करने का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। यस, ह्यूज पॉसिबिलिटी, ह्यूज पॉसिबिलिटी। अग्रीड? यस। सो दैट इज नोन एज द क्वालिटी कॉस्ट। सो क्वालिटी कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टुडे कोई भी अगर आप रिपोर्ट्स चेक करो ना, ओनली द फाइनेंशियल फैक्टर्स आर नॉट इनफ क्या बता दो कि भाई ये कंपनी अच्छी है कि नहीं। सो यस गाइस, द क्वालिटी कॉस्ट ओवर हियर appears to be very important in the differentiation strategy. Like अगर आपको याद होगा, I told you कि there are two types of strategy. Yes, first is the cost leadership, another is product differentiation. अगर आप कुछ न्यू ऐसे मार्केट में जा रहे हो लाइक आईफोन, जहाँ पे लोग कुछ भी पे करने के लिए तैयार है बिकॉज दे आर गेटिंग सम गुड क्वालिटी। सो अगर आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स में हो जो डिफरेंशिएशन फॉलो करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्राइस भी नहीं है, आपका क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी पे खर्चा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। दैट इज द रीजन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, अगर आप उसको रीड करते हो, द कंपनी अपीयर्स टू बी परस्यूइंग अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऑल्सो। एंड ये है हमारा KPI जिसपे हम मेजर करते हैं कि भाई कितनी क्वालिटी कंपनी ने अचीव की। However, it is not clear whether these costs are कैसे, मतलब मुझे नहीं पता ना कि ये प्रिवेंटिव कॉस्ट है या डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है, कैसे है, करेक्टिव है कि नहीं। तो मैं इसे जज नहीं कर सकती कि ज्यादा कॉस्ट है तो क्या है। मे बी ज्यादा कॉस्ट प्रिवेंशन का है तो इट्स गुड, इट्स अ गुड क्वालिटी कॉस्ट, ताकि आपकी फ्यूचर में बैड क्वालिटी कॉस्ट कम होगी। सो यू हैव टू एनालाइज इन बोथ द वेज एंड इंटरप्रेट द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आई नो कि ये स्टूडेंट्स को तभी समझ में आएगा वंस आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज डू चेक माय वीडियोस। मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत छोटे से एंड प्रिसाइज टाइम में उसको कवर किया है। यस, या वी कैन गो अहेड। ओके, नाउ इफ यू जस्ट सी इट, you have completed तीनों के तीनों points. Okay, in the question if you see, ये तीनों के तीनों points हमने cover कर लिया for the first question. Yeah, first question is done. Up next we have second question. Second question क्या बोला है? This is for 13 marks which we successfully achieved. Second, evaluation of how well the CSFs reflect the competitive pressure. Competitive pressure. So किस किस का pressure है? मुझे देखा जाए तो मेरी कंपनी जैसा हेंडरसन ही है, बट अभी एक न्यू कॉम्पिटिटर आ गया है या प्रोटेम, तो वही कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी है, तो उसको भी हमें रिप्लाई करना पड़ेगा। सो या माय अप नेक्स्ट आंसर टर्न्स अराउंड टू बी दिस, व्हिच इज कॉम्पिटिटिव प्रेशर। सो अगर मैं आपको कॉम्पिटिटिव प्रेशर की बात करूं, सो इट इज अ फुल फ्लेज्ड सिचुएशन कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर आने की वजह से मेरे सेल्स पे क्या प्रभाव पड़ा। ओके, आपके शेयर्स पे क्या प्रभाव पड़ा। इफ यू रीड दिस फर्स्ट लाइन, आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग इट ताकि आपको समझ में आए। बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटर आपके सेल्स कुछ कम हो गए। ओके, आई जस्ट बुक इट ओवर हियर। Yeah, just try to correlate it. Okay, ये question है. That is the total market for मेरा company क्या था पहले in 2005. So I'll just write it. Okay, this is a total share, total market share. Total market में इतनी sales थी and ये मेरा share था, मेरा share. Basically in 2005. Basically in 2005 the total market का share was 1670 and I have turned a revenue of 439. Means कितने percentage होंगे? Please divide it. Are you getting something around 26.3% आपका शेयर है? Yes. But 2004 में total shares was total how much market में आपने units total sale कितना हुआ था? Was 1585 and उसमें से हमने सेल किया था 434. That shows कि आपका तब के जमाने का शेयर would obviously be more, that is 27.4. Yeah, so that shows कि भाई ये साल ना हमने कम सेल किया because what happened? Because the new competitors have entered into. Yes. So this is what I have to पहले formalize because कि new entrant आ गया है. New entrant कौन है? मेरा प्रोटिम.
तो उसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम है. ओके, सो टू जस्ट राइट इट. न्यू एंट्रेंट की वजह से, या द कंपनीज परफॉर्मेंस मेजर्स अपीयर्स टू हैव बीन डिजाइन्ड व्हेन द मार्केट वाज स्टेबल. तब आपने ऐसे बना दिया था, बट आज आपको पता है कि बहुत सारी चेंजेस की वजह से यू हैव टू रीन्यू इट, यू हैव टू मेक द चेंजेस. आपको कभी कभी आपके बजट्स में भी चेंज करने पड़ सकते हैं, लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, और बहुत कुछ फैक्टर्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं. इट्स ओवर हियर क्लियरली गिवन दैट कि पहले जो था was 27.4, but now the market share has fallen to 26.3, and yes, this is clearly evident. Up next, खाली इतना ही टॉपिक था स्टूडेंट्स. जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो प्लीज जंप करो आप उस पे, एग्जिबिट्स पे. सो व्हाट वाज माय एग्जिबिट? कॉम्पिटिटिव एग्जिबिट. या अगर आप चेक करो, दिस इज माय कंपटीशन एग्जिबिट. अच्छा, तो ये न्यू कॉम्पिटिटर आ गया है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. सो ही इज डूइंग दैट प्री पैकेज्ड थिंग्स, और हमने भी एंटर कर लिया है. वो चीपर क्वालिटी का है, चीप प्राइस पे है, एटसेट्रा एटसेट्रा. Okay, it is having a lot of stuffs. So yeah, up next we'll be just putting it ahead the further concepts. Yeah, so उन्होंने बोला है ब्रांड स्ट्रेंथ. जो हमारी कंपनी है वो अच्छी, उनका नाम बहुत अच्छा है. as हमारी कंपनी बहुत है ना, काफी टाइम से वेल रेप्यूटेड है. या यस, सो आई जस्ट पुट दैट शोज कि ब्रांड स्ट्रेंथ, एन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, माय कंपनी इज एन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर इन द मार्केट. सो क्या हुआ, हमारी ब्रांड काफी अच्छी है, तो शायद अगर जो न्यू कंपनी है उन्होंने इतना ब्रांड अच्छी नहीं बना पाई, तो भी मैं सस्टेन कर लूंगी. इट इज शोइंग दैट वे. ओके, मीन्स माई कंपनी नीड्स टू एंश्योर दैट इट यूजेस द ब्रांड स्ट्रेंथ सो दैट पोटेंशियल कस्टमर्स उनके पास ही रहे, वो प्रो टीम के पास ना जाए. सो ये हो सकता है अगर मेरे कस्टमर्स मेरी कंपनी से सेटिस्फाइड है, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ वो कैसी है, क्या वो अच्छी टेक्नोलॉजीज है. या सो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रो टिप है ना, अब वो न्यू कंपनी है तो मे बी उनके पास टेक्नोलॉजी भी बेटर होगी, तो क्या मेरी कंपनी उनके टेक्नोलॉजी को compete कर पाएगी? सो दैट ऑल्सो आई हैव टू राइट इट. Yep. So pro team appears to taking the advantages of the new product technologies. And हमने क्या किया है? We are going to make it by my own. So maybe, may not be. It depends. It depends. Okay.
Let us start with the next question, which says about the total quality management. Okay, I know it's a big question, but easy है, it's manageable अगर हमें concepts पता है, ठीक है? Okay. What is the third question? उन्होंने बोला, state the benefits of introducing the TQM approach. So मुझे concepts पता होना चाहिए. What is TQM? Total Quality Management. Total Quality Management. And now I have to start developing the answers for TQM. Okay. Let's just read the answer for TQM. So students, जब मैं total quality management की बात करती हूँ, we know one concept that if a company puts up the TQM, ठीक है, अगर वो TQM डेवलप करती है, सो ऐसा नहीं है कि डे वन पे ही उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि उसमें कुछ जीरो डिफेक्ट्स लाइक हो जाएंगे कि अरे कोई भी डिफेक्ट्स नहीं होगा. नो, इट्स नॉट दैट. इट इज डे टू डे स्लोली 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 इंप्रूव ऐसे करना है कि आपको एक टाइम के बाद ऐसा है कि योर प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम जीरो एरर्स, लाइक जीरो डिफेक्ट्स. या सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी को मैनेज करना. सो जो मैनेज करना है मेरी क्वालिटी को, तो उसके लिए मुझे दो खर्चे करने पड़ेंगे. कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी कॉस्ट. अगर आपने गुड क्वालिटी कॉस्ट पे खर्चा कर लिया है तो आपकी बैड क्वालिटी की कॉस्ट नहीं आएगी. मींस प्रिवेंशन कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर. सो बस उसी को आपको एज अ बेनिफिशियल आपको रिसेंटली उसको शो करना है द आंसर्स. सो दैट कम्स अप दिस वे. So zero defects. One of the key principles of the total quality management is that rather than starving for an optimum level of quantity, उनका टारगेट है कि भाई एक टाइम के बाद ना मेरे प्रोडक्ट्स में जीरो डिफेक्ट्स होने चाहिए. एंड ये आपको पता है कि ये एक बार में अचीव नहीं होगा. इट टेक्स अ कपल ऑफ years or maybe couple of time. Yeah. So there has been a recent increase in the number of jobs which the question has shown कि काफी खर्चा हो रहा है about the remedial work after construction. तो this might be the problem कि ये खर्चा क्यों हो रहा है? Because there will be defects. रेमेडीज, उसको ठीक करने का खर्चा क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. इट इज गिविंग अ हिंट दैट देयर कुड बी सर्टेन प्रॉब्लम्स. सो इट्स आल्सो नोन एज डिटेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन कॉस्ट. मींस आपकी कुछ भी स्टेप्स चालू होने से पहले ही जो खर्चा कर लिया है ताकि आपके आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, इट्स नोन एज प्रिवेंशन कॉस्ट. दैट इज इट इज लिंक्ड टू another key concepts of TQM which says इंस्टेड ऑफ रिलाइंग, मतलब एक बार आपने स्टार्ट कर लिया उसके बाद खर्चा हो, प्रॉब्लम हो एंड फिर आप सॉल्व करो, उसके पहले ही अगर आप रिलाई कर रहे हो कि पहले ही आपने खर्चा कर लिया, लाइक यू रिलाइंग इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द इंस्पेक्शन कॉस्ट, आपने क्या किया, डे वन पे ही डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं ये नहीं करना है, इसको प्रिवेंट करना है. यस, देयर कुड बी अ सिचुएशन. The causes of the defect needs to be identified and take the appropriate thing to prevent it from occurring. This is important. To prevent it from occurring the defects only. And that is nothing other than that is known as the prevention cause. The fact that the amount of the remedial work is increasing, maybe आपने पहले defects को identify नहीं किया हो. अगर आपने पहले खर्चों को identify नहीं किया है तो definitely हमारे पास क्या होता है students? Failure cost. Yes, we have a lot of failure cost. So if you can see in the question, हमें कुछ cost लगे भी है, याद है? So failure cost क्या हो गए? अगर हमने another principle is, अगर आपने कंपनी में पहले एक्सपेंडिचर नहीं किया तो यू विल बी डेफिनेटली हैविंग अ लॉट ऑफ फेलियर कॉस्ट. एंड क्वेश्चन में बोला है योर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज 248 एंड योर बजट वाज 195. एंड या मुझे पता है कि क्वेश्चन में इट इज नॉट क्लियरली सेड कि भाई ये कॉस्ट जो लग रहा है वो क्वालिटी की वजह से है, बैड कॉस्ट, गुड कॉस्ट, एनीथिंग. सो इट कैन बी अ कपल ऑफ मिक्सचर. ओके, तो मैंने बस उसको भी रिकॉर्ड कर लिया. अगेन देयर इज सम कल्चर, दैट इज क्वालिटी कल्चर. यस, द फैक्ट दैट द कस्टमर आर सेटिस्फाइड, ये भी एक बात आती है कि मेरी क्वालिटी कैसी है. ओवर हियर इफ यू नो, आपको पता होगा कि हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाज 3.5 एंड माय एक्सपेक्टेशन वाज 4. ये एक और रीजन है कि शायद आपका नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो क्वालिटी का है कैन दैट बी बैड, या मे बी इसकी वजह से भी आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम है. सबको जो भी पता है ना स्टूडेंट्स, आपको उस आंसर को उस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा. ओके, so yeah, that's enough for that. Good. Again, now we have a very important topic which is known as benchmarking. Okay, they have asked us in the question कि please आप provide कर दो for benchmarking also. So हम benchmarking के लिए भी provide कर देंगे answers. It's very easy. State the benefits of benchmarking against the Henderson's performances.
सो अगर मुझे हेंडरसन्स परफॉर्मेंसेस के सामने बेंचमार्किंग करना है तो आई हैव टू सी बोथ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ द कंपनीज. सो अगर आप नॉर्मली चेक करो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन द अपेंडिक्स 1, पहली बात आपकी यूनिट्स भी बहुत कम सेल हुए हैं कंसिडरिंग देम, प्रॉफिट्स भी कम है, एवरेज सेलिंग प्राइस भी कम है, एवरीथिंग इज लेस. इफ यू सी एवरीथिंग इज लेस. अलॉन्ग विद दैट हमारी कंपनी क्या कर रही है, माई कंपनी इज ट्राइंग कि हम न्यू प्रोडक्ट में भी जाए. बट वही अगर हेंडरसन की बात हो तो हेंडरसन ट्राई करिए कि मुझे न्यू प्रो टिम्बर वाले में जाना नहीं है, बट मेरी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है उसी को और बेटर 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 करना है so that I can reach to the max. Yeah, okay. So that is the meaning of benchmarking. So पहले आपको definition लिखना है कि what's the meaning of benchmarking. Means आप खुद के financial statements को देखो. दूसरी पहले तो आपको ना like एक competitor को find out करना है who is the best competitor with whom you want to do the benchmarking. या आप एक पार्टनर या एक competitor को find out कर लो. Then it's your responsibility कि उनके performances check करो. अगर उनके performances मेरे performances से अच्छे हैं तो फिर मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने की नीड है, or else it's not required. Okay, let's go ahead. So competitive benchmarking says by comparison the performances of the company against these. Henderson. So make it career my company. My company is benchmarking its financial performances against the competitor. As with the benchmarking exercise, the benefits of this comparison can help us कि हम और कैसे better perform कर पाए. So students, when it is benchmarking, I want 2-3 words pakka in the answer, that is performing, improving performances. And comparison करके ना खाली ये नहीं करना है कि अरे मेरी कंपनी खराब है. No, I want to manipulate it इस तरीके से कि उनमें जो better है वो हम implement कर दें ताकि हमारी भी financial performances और अच्छे हो जाए. Yes, that way. So comparing the financial performances with the competitor can help us to remind the management कि भाई external factors को भी आप ध्यान पे लो and फिर उसको formulate करो. Okay, but yeah, there are certain limitations also benchmarking में, क्योंकि सबसे बड़ा limitation यही है guys कि मुझे ना पता ही नहीं चलता कि मुझे compare किससे करना है. अगर मैंने किसी ऐसे से compare किया जो मुझसे भी अच्छा नहीं है तो maybe I will not actually get the benefits of this benchmarking. So it says comparability of company. So my company is looking to diversify of its product and thereby invest करना है मुझे new company में. But हेंडरसन कंपनी वो फोकस कर रही है अपने नॉर्मल थिंग में, एग्जिस्टिंग मार्केट में ही. वो नहीं चाहती कि वो प्रो टिम्बर के जैसे अलग बना दे. नो नो नो. एज सच द टू कंपनीज अपीयर्स टू बी इन द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, which means that comparing performances for the single year may have some limited value. क्योंकि वो लोग 100% सेम चीज नहीं कर रहे. Maybe now that could be a different. The fact that the current reports only look at the financial data, not the financial arrangement, be useless. Because अगर मुझे एक proper analysis चाहिए तो I just don't need financial terms, I need non-financial factors also. तो मैम ये हो सकता है impact. Yeah. We are going good, we are going good, we are going good and अच्छे से जा रहे हैं. Okay. Now we have a competitor's choice also. Choice of competitors. कैसे? अगर आप क्वेश्चन में चेक करो तो अगर आप चाहो तो आप अपने आप को प्रो टीम के साथ भी तो कंपेयर कर सकते हो, बट आपको उससे थ्रेट है. बट स्टिल शायद आपको उनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा बेटर लगे तो आप उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हो. You can compare it in both. So it is written here that in addition to current benchmarking exercise only compares Oak's performances with Henderson. आपके पास chance है because you have a thread from ProTim that shows कि you can start comparing आपके pre-assembled things with this ProTim, ताकि अगर आपको भी उसमें कुछ बेनिफिशियल मिल रहा है तो you can take an advantage of that. Okay. Yes, easy. Now we have the last question of short versus long term performances. उन्होंने बोला कि short term and long term का पता है bonuses. So we'll see कि which is better. Is it short term better या long term? Current year में इतने profits नहीं है पक्की बात. तो short term में तो you will not get bonus. So company ने सोचा कि चलो ना कुछ long term plan में जाए ताकि आपको bonus दिया जा सके. Okay. So वो कैसे उन्होंने सोचा? Let's just read it. Okay. In general terms, if you just see it, yeah, in general terms, it could be argued that the directors of the company का हमेशा शॉर्ट टर्म ही इंटरेस्ट रहता है. Yes. बल्कि जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है. नॉर्मल डायरेक्टर्स का होता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, बट इक्विटी होल्डर्स का होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बिकॉज दे वांट कि प्राइसेस बढ़ जाए लॉन्ग रन में. तो हमें तो बोनस की बात की है. सो व्हाट डू यू थिंक? बोनस इसमें ऐसा आता है स्टूडेंट्स कि यू गेट द बोनस बेस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म ज्यादा.
करंट ईयर का प्रॉफिट्स, उसी पे बोनसेस, राइट? So my company's bonus scheme currently reinforces on the short term process. That is, since the bonuses will be paid अगर आपका profit achieve हो तो, yes. In this respect, bonus scheme could also lead to decisions जो कि खाली short term है and not the long term shareholder view. नहीं, बिल्कुल shareholder view पे वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, सिर्फ short term perspective. For example, the company might also reduce, अगर आप चाहते हो कि ये साल आपको बोनस देना है तो क्या करोगे आप? जानबूझ के कॉस्ट कम कर लोगे? नहीं करना चाहिए बट फिर भी कर लोगे, राइट? तो अब शायद रॉ मटेरियल का डिग्रेड कर दोगे या कुछ और ऐसे कॉस्ट भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, पक्की बात है, ओके? सो हियर फॉर एग्जांपल, द कंपनी माइट बी एबल टू रिड्यूस द रॉ मटेरियल by switching the supplier, okay, but this could be damaging the brand name and reputation. तो लॉन्ग रन का आप ध्यान नहीं दे रहे हो और करंट ईयर में आप कर रहे हो, सो या दिस कैन ऑल्सो हिंडर. सो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको एक चीज पता होगा कि अगर आप कुछ मेजर करते हो तो देयर इज अ सेइंग व्हिच इज बीन गिवन बाय हुम, यस, बाय योर पीटर ड्रकर. उसने बोला है कि वो चीज बेस्ट होती है जो मेजर हो सकती है. yes. Things done better, like things can be measured, can be done better. So yeah, over here there is a saying by the Peter Drucker that what gets measured is done better. Means what gets measured gets done. Yeah, that shows कि कंपनी ने बोला है that the aspects of the performances अगर measure कर पा रहे हो तो क्या होगा, इन लॉन्ग रन आप बेटर परफॉर्म करोगे. अगर खाली ABCD ग्रेड्स है, you will not put your 100% efficiency. तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है. Okay, up next, as we noted earlier, या हमारे पास था ROCE जो कि परफॉर्मेंस मेजर करता है. व्हाट इज ROCE? ओके, अगर आप यहाँ पे चेक करो स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म, ओके, द कंपनी इज हैविंग KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में हमारे पास एक इंडिकेटर है व्हिच इज नोन एज which suggests शॉर्ट टर्म फोकस भी करना है, लॉन्ग टर्म भी. फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मार्जिन्स एंड ROCE. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले क्या कहते थे, द यूज ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था ताकि हम समझे कैन डिस्करेज द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी. क्योंकि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लिया तो आपका परसेंटेज कम हो जाएगा. आपको याद है, तो कंपनी क्या करती थी, जैसे भी एसेट्स है उनको चलाती रहती थी, और अगर न्यू एसेट्स लेके आएंगे तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा. सो ये भी लोग करते हैं, विच शुड नॉट इवेंचुअली हैपन. सो हाउएवर, आज के डेट पे डायरेक्टर्स ने क्या बोला, द डायरेक्टर्स बिलीव दैट द प्री असेंबली हाउसिंग मार्केट इज ग्रोइंग मार्केट, एंड उनको लग रहा है कि भाई फ्यूचर में उनको प्रॉफिट्स हो जाएगा. सो इट अपीयर्स दैट द डायरेक्टर्स हैव इन्वेस्टेड with the aim to grow more. Yeah, so that it can be the reason. Yes. I hope ये आपको पक्का पक्का समझ में आ गया. Yes. So then what is the long term मैम plan? Long term plan होता है बेसिकली कुछ मैम 3 to 5 years का आपको प्लान बनाना है ताकि ये long term and sustainable हो. That shows over here. The long term initiative plan, incentive plan says the suggestion to introduce the long term plans appears to be designed to encourage the management कि आप long term decisions ले सको. To decision you have to take for the long term. The purpose of long term is to reward the executives getting a better maximum out of the profits. जैसे कि it can be for more than 3 to 5 years rather than just एक दो साल का सोचने से better है, think it more so that आपका जो बड़ा सारा मिशन है ना वो अचीव हो सके. And yes students, with this we have completed the first question. जिसमें जब आपने इंट्रोडक्शन लिखा तो यू हैव टू राइट द कंक्लूजन ऑल्सो कि भाई ये रिपोर्ट है तो ये रिपोर्ट में हमने क्या क्या बात किया. सो यस, सो ईयर कंक्लूजन, द रिपोर्ट हैज शोन कि मुझे कौन से जगह पे अपने आप के परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करना है. करेक्ट, यस. सो करंटली द KPIs डू नॉट प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग इनफ लिंक, उसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. यस. फाइनली टू डेवलप और अच्छी क्वालिटी बेंचमार्किंग प्रोसेसेस पे भी आप ध्यान दे सकते हो. सो जो भी क्वेश्चन में इंट्रो पूछा है ना, जस्ट कॉपी पेस्ट एंड पुट इट एज एन एक्स्ट्रा ऑल्सो. That is your conclusion. Okay, so yeah, with these we have completed the first question. Yes, just take a break of 2 minutes and yeah, we'll start with the second question too, which is section number B. And trust me, section B के दोनों भी questions बहुत छोटे छोटे हैं and easy है.
So yes students, now we are at a position जहाँ पे हमने सेक्शन ए अच्छे से कर लिया. अब क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी. इंटरेस्ट में स्टूडेंट्स सेक्शन बी ज्यादा इजी होता है. तो आप पे डिपेंडेड है कि आप पहले सेक्शन ए करना चाहते हो या सेक्शन बी. तो सोच समझ के हमें आंसर को प्रेजेंट करना होता है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम की कमी की वजह से जो हमें सेक्शंस आते हैं वो भी हम नहीं लिख पाते. लाइक सो इट्स इंपॉर्टेंट. ओके ओके. एंड विद द सेक्शन बी क्वेश्चंस आर स्मॉल. ओके क्वेश्चंस होंगे आपके स्मॉल. बस आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे रीड करने हैं क्या, द रिक्वायरमेंट्स. सो या दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी. उन्होंने दिया होगा फिर कुछ क्वेश्चंस. एग्जिबिट 1 एंड दिस इज योर सिंपल रिक्वायरमेंट्स. दिस इज योर रिक्वायरमेंट. ओके सिंपल. सो इफ यू सी दिस, ज्यादा इसमें ना रिक्वायरमेंट्स होते भी नहीं है. ओके आई जस्ट मेक अ थिंग या बिकॉज ज्यादा है ही नहीं. बट ये क्वेश्चन पढ़ के आपको मुझे बताना है कि कौन से क्वेश्चन पे ये हिंट हो रहा है. ओके विच चैप्टर विच टॉपिक. ओके बिकॉज हम क्या करते हैं, हमेशा 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 रिक्वायरमेंट्स स्टार्ट करते हैं. सी रिक्वायरमेंट्स explain the emphasis of non-financial performance indicators. हाय मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक जो हमने YouTube पे बहुत 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 टाइम लेके मैंने पढ़ा है ये. सो स्टूडेंट्स इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज आपको पता है दैट यू हैव टू क्लियरली राइट कि ये कंपनी की क्या सिचुएशन है. दे विल आस्क यू अबाउट द बैकग्राउंड एंड टुडे यू नो दैट अगर आप कोई भी कंपनी की खाली फाइनेंशियल डेटा को कंसिडर करते हो तो लॉन्ग रन में आपके डिसीजंस रॉन्ग हो जाएंगे. पक्की बात. आप खाली पीएनएल देखोगे तो नहीं चलेगा. नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. हो गई क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, आफ्टर सेल सर्विस, एवरीथिंग सही होना चाहिए. सो विद द बैकग्राउंड ऑफ माय कंपनी मुझे उसको आंसर करना पड़ेगा. फॉर द जीए इज माय कंपनी. ओके सेकेंड, यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड provide a range of non-financial performance indicator under the headings of O. कुछ याद आना चाहिए. Competitiveness, resource utilization and quality. If students को ये word सुन के अगर याद आ रहा है BBM, I am the most happiest person. Book building model, building block model, sorry, book building नहीं, building block model. In that we have day one पे targets, we have set standards, we have rewards and कुछ results होते हैं जिसके determinants and results. So we have over there, we have dimensions. तो वो dimensions में कुछ determinants है, कुछ results है. So अगर हमने देखा कि competitiveness मेरा है results, this is my results and this is results and this are my resource को कैसे utilize करना है, ये होता है मेरा determinants and quality भी है मेरी determinant का factor. Okay. So अगर ये पढ़ के मुझे पता क्या लग रहा है, पता है कि जो क्वेश्चन होगा ना जीए कंपनी, ये होगी सर्विस इंडस्ट्री, क्योंकि बीबीएम मोस्टली अप्लाई होता है सर्विस इंडस्ट्रीज पे. देखते हैं. So they have given, please give the importance to GA company about each indicator. Okay, 3 indicators है of your performances and produce and assess the company के reports and results. Okay. In the context of my managing director's request, MD ने कुछ request किया है. Third question, please describe briefly the dimensions. अच्छा dimensions में again BBM. Okay, and explain how the dimensions are linked with the standards and target. Okay. So don't you think पूरा उन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को पूरा का पूरा लाइक प्रिपेयर करा है. यस. इन दैट सर्टेन अपेंडिक्स भी दिया है उन्होंने क्वेश्चन में. एंड ओके इफ इट इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का बैकग्राउंड. ओके उसको मैं बहुत नीचे कर देती हूँ. ओके कूल. वी गो टू पेज अप. विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट. अच्छा क्वेश्चन इज वेरी स्मॉल. ओके क्वेश्चन इज वेरी स्मॉल. फर्स्ट इफ यू रीड द क्वेश्चन, सेक्शन 2 इज कंपल्सरी वेयर आपको लिखना है 20 मार्क्स के लिए एंड डेफिनेटली आपको 5 मार्क्स मिलते हैं प्रोफेशनल राइटिंग्स के. ओके विदाउट एनी फर्दर डिले जस्ट हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं. ओके अबाउट द कंपनीज स्ट्रेटेजिक एंड बैकग्राउंड. मेरी कंपनी है ग्लैन एसोसिएट. इट इज अ security firm. It's a security firm which provides installation and service contracts for security system. So ये बनती है बेसिकली द सर्विस इंडस्ट्री. सो ये जो फर्म है वो काम करती है अबाउट इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज. सो एक साइड पे इंस्टॉलेशन है, दूसरी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स है. ओके फॉर इट्स प्राइवेट एंड बिजनेस क्लाइंट्स.
In the last few years, अगर आप check करो, in the last few years, the business generated has started to slow and the directors realize कि उनको maintain करना पड़ेगा अपना success and ये बहुत जरूरी है. तो काफी टाइम से वो थोड़ा डाउन हो रही है. तो क्यों ऐसा हो रहा है? Let's just read it. Let's just try to analyze it. So the strategy of the business, मेरी business की strategy क्या है? The strategy of the business is to increase the customer base. ताकि जितने ज्यादा customer, उतना better the company is. This is particularly important for installation as once a system is installed, the service business will flow automatically. Means सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको install करवाना पड़ेगा. Installation हो गया तो automatically the things will work. Okay. Background दिया है खाली question में. Yeah. A fourth strategic concern is that the business will only be retained. ये business क्यों चलेगा? कब तक चलेगा? जब तक आप अच्छी quality दोगे. So quality is the most important thing, right? The further strategic concern of the directory is that the business will only be retained if the quality of the services is of the highest standard. अगर आपकी quality खराब हुई तो क्या होगा students? आपके long run में आपका खत्म हो जाएगा business. A further aspect of the strategy is that the cost must be controlled. Okay. तब कि आपका prices बढ़ाओ नहीं, quality को maintain करो और cost को control करो. Okay. So this is the normal thing which they have given. Second, उन्होंने कुछ ना performance indicators दिया है. So in the past, my company, my managing director has observed and has only assessed performances of the company based on financial factors. So पहले खाली financial factors पे ध्यान देते थे. अब मुझे पता है खाली financial factors काम नहीं होंगे मैम. आप बोलोगे कि मैम financial के साथ आपको non financial factors पे भी emphasize करना बहुत जरूरी है. Yes. However, having recently attended the course, अब मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर को लगा कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट बनते हैं. ओके, तो क्या हुआ? however having recently attended the course, उनको लगा कि भाई NFPI को भी ध्यान में रख लो. So he is now considering whether to incorporate the indicators or not. So for that, the managing director has provided you with the data as on 31st March 2021 with certain appendix. ठीक है. अब उन्होंने क्या दिया है? मेरी कंपनी के कुछ अपेंडिक्स 1 में उन्होंने कुछ मुझे डेटास दिया है. सो आई विल फिगर इट आउट. ओके, लास्ट में उन्होंने क्या बोला है? मेरी कंपनी के इंजीनियर्स हैव रिसेंटली परफॉर्मेंस बोनस रिलेटेड कुछ था कि जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना ज्यादा उनको बोनस मिलेगा, which is currently based on the company के net profits. अगर आपके net profit ज्यादा, more the bonus. Reverse the scenario, less the bonus. So the managing director of my company is also considering कि उनको नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को कैसे ध्यान में रखेंगे, कंसीडरिंग द फिट्जगेराल्ड इन द मून बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. ओके, सो अब नेक्स्ट मुझे अभी अपेंडिक्स 1 भी पढ़ना पड़ेगा. सो व्हाट इज अपेंडिक्स 1 गिवन इन द क्वेश्चन? अगर आप अपेंडिक्स 1 की बात करो तो कुछ स्टैटिस्टिक्स उन्होंने सेलेक्ट किया है. मींस कंपनी का रेवेन्यू है 11840. ओके, कैन आई मेक इट लाइक दैट? स्टूडेंट्स आपको ना इसमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा. ओके, the revenue is 1 crore 84 lakhs. Okay, the net profit of the company is 947. Okay, the total client inquiry is this much. Now what's that total client inquiry? If I'm having my firm, ठीक है, तो काफी सारे लोग आएंगे, मुझे इंक्वायरी पूछेंगे. कभी न्यू कस्टमर होगा, उनको कुछ भी डाउट है तो वो मुझसे पूछेंगे. अगर वो मेरी क्वेरीज से सेटिस्फाई हो गई तो ही वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट देंगे. एवरी कस्टमर जो शॉप में आता है कॉन्ट्रैक्ट क्या वो मेरा कस्टमर नहीं बन जाता. पहले वो लोग पूछते हैं, फिर वो कंफर्म होते हैं एंड देन इट गोज अहेड. एग्जैक्टली. तो लाइक आई कैन नॉट से, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि भाई एवरी कस्टमर जो मेरे शॉप पे आया वो मतलब एवरी पर्सन जो मेरे शॉप पे आया वो मेरा कस्टमर बन गया. ऐसा होता ही नहीं है. ठीक है, ऐसा होता पॉसिबल ही नहीं है. सो क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन में? इफ यू कैन रीड इट. या टोटल क्लाइंट्स इंक्वायरी आ, न्यू बिजनेस के लिए 4230 इंक्वायरी आई, रिपीट बिजनेस के लिए 1840 इंक्वायरीज आई. ओके, अब इतनी इंक्वायरीज आई न्यू बिजनेस के लिए 4230, उसमें से कितनों को अच्छा लगा? अच्छा, इंक्वायरीज दैट टर्न्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, ये इंक्वायरीज कंफर्म हुई न्यू बिजनेस में 3005. मींस आउट ऑफ, मैं लिख सकती हूँ आउट ऑफ लाइक 4230 टोटल. मैं यहाँ पे नहीं लिखती ना, इट्स नॉट बेटर, so very around
आउट ऑफ 4230 टोटल इंक्वायरी कितनी बनी, टोटल कंफर्म्ड हुए हमारे 3005। तो क्या लगता है कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि कितने परसेंटेज इंक्वायरी जो थी वो कंफर्म मेरी कॉन्ट्रैक्ट्स बन गई? ओके, अगर आप उसको परसेंटेज में चेक करो तो यू विल गेट टू नो कि काफी अच्छे परसेंटेज से आपकी क्वेरी है वो बन गई, दैट इज ओनली 71%। यस, 71%। या कूल कूल कूल। ओके, दैट आई एक्सप्लेन यू, दैट आई एक्सप्लेन यू, वो हम करेंगे। या 71%। ओके, अबाउट द न्यू बिजनेस। अब न्यू बिजनेस के बारे में तो हो गई मैम, रिपीट बिजनेस का क्या है? तो कितनी क्वेरी आई? अच्छा, आई गॉट 1840 क्वेरीज, इंक्वायरीज एंड 1510 confirmed. Oh my god, that's good, isn't it? तो वो कितना लगता है कि कितने परसेंटेज कंफर्म हुए? प्लीज गेट इट। आर यू गेटिंग अराउंड 82.1%? ये तो काफी अच्छी बात हो गई। यस, अग्रीड, यस। तो दिस इज व्हाट आई हैव कंसीडर्ड, ये दो स्टफ को कंसीडर करके मैंने ये बनाया फर्स्ट पॉइंट। ओके, या आर यू गेटिंग इट? यस और नो? यस, या। नाउ ये तो हमें पता चला। अब नाउ व्हाट इज दिस नंबर ऑफ सर्विस कॉल आउट्स? अच्छा, मतलब कितने लोगों ने ये सर्विसेज को यूज किया, हाउ मच सर्विसेज दे आर यूज। सो बेसिकली देयर आर सम 14320 पीपल ने, उनको ये सर्विसेज चाहिए थी तो उन्होंने मंगवाई, सर्विसेज को यूज किया। नाउ नंबर ऑफ इंजीनियर्स एम्प्लॉयड। सो कितने इंजीनियर्स को एम्प्लॉय किया था उन्होंने, मीन्स मेरे कंपनी में कितने एम्प्लॉयड है? इंस्टॉलेशन के लिए 34 है, सर्विसेज के लिए 95 है। सो अब ऐसा समझो, ये क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते अगर मैंने एसी परचेस किया हुआ है, ओके, एयर कंडीशनर, तो क्या होता है, मैंने अगर एसी परचेस किया है तो पक्की बात है कि वो मैं परचेस तो कर लूंगी, वो इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे, फिर आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे। तो मुझे देखना पड़ेगा कि इंस्टॉलेशन के लिए उन्होंने कितने पर्सन को हायर किया है, सर्विसेज के लिए कितने पर्सन को हायर किया है। अगर आपको पता चला कि इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है एंड अगर उन्होंने इतने कम लोगों को एम्प्लॉय किया, आपको नहीं लगता कि रिसोर्स दे हैव नॉट यूटिलाइज्ड इट प्रॉपर्ली? तो वो उनको ठीक से करना होगा। तो ठीक है, वी कैन आंसर इन दैट वे आल्सो। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है टोटल इंजीनियरिंग आवर्स कितने घंटे लगे। हाउ मच आवर्स आर देयर? तो टोटल इंजीनियरिंग आवर्स हुए हैं, इंस्टॉलेशन के लिए दे टुक दिस मच आवर्स, सर्विसेज के लिए काफी सारे आवर्स उनको लगे। यार इट्स ह्यूज। फिर इतने सारे कॉल्स होने के बाद क्या हुआ, इतने कंप्लेंट्स आई कंपनी के पास। कितनी कंप्लेंट्स है? अच्छा, दिस आर द नंबर्स ऑफ कंप्लेंट्स द कस्टमर गॉट्स, द कंपनी गॉट, दिस आर द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। इंस्टॉलेशन में 934 कंप्लेंट्स है, सर्विसेज में 1250 कंप्लेंट्स है। और ये नॉर्मल टाइम है, एवरेज टाइम, कि जब फॉर एग्जांपल अभी मैं गई वहां पे, कोई भी इंस्टॉलेशन के लिए बुलाया तो उनको नॉर्मली मेरे घर तक आने के लिए कितने आवर्स लगे। सो उन्होंने ना एक एवरेज निकाला है, दे एवरेज, दे थिंक कि टाइम टू रीच द क्लाइंट इज 3.2 आवर्स एवरी एवरेज। नाउ इतने आवर्स लगे मेरे टोटल इंजीनियरिंग आवर्स एंड दिस इज माई चार्जेबल टाइम फॉर इंजीनियर्स। अब इतने चार्जेबल टाइम हुए, इतनी अमाउंट पे मैं उनको चार्ज करूंगी, दैट इज 62830 was the chargeable hours, but आपको लगे ज्यादा hours. Okay, here also it's this and you incurred a lot of hours. Now आज मुझे इंक्वायरी आई, कल कंफर्म हुआ एंड मैंने डिलीवरी दे दी, सब कुछ इंस्टॉल कर दिया। ऐसा नॉर्मली होता है 5 days के गैप में, सो लाइक 5 days एवरेज इट टेक्स। ओके, नाउ आपको काफी सारी कंप्लेंट्स आई, राइट? कंप्लेंट्स ऑफ इंस्टॉलेशन, कंप्लेंट्स ऑफ सर्विसेज, बट आपके कितने सर्विसेज हुए थे? तो यार दिस आर द थिंग्स व्हिच इज गिवन इन द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। या सर्विसेज के रिलेटेड उन्होंने बोला है, सर्विसेज के रिलेटेड इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। ओके, करंट ईयर में 18890, प्रीवियस ईयर में 15890। ओके, नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन में हुए हैं बेसिकली प्रीवियस ईयर में 8120, करंट ईयर में 9635। तो माय गॉड, सो मेनी डिटेल इज गिवन, राइट? अब मुझे इन सबको अपेंडिक्स को अंडरस्टैंड करके आई हैव टू फॉर्मुलेट द आंसर। So yeah, without any further delay, we have to just write it first question उन्होंने क्या बोला है। So मैंने अभी तक ना पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया along with the appendix. Now, my first question is,
Explain the growing emphasis on the non-financial performance indicator. So मुझे क्या लग रहा है कि कौन सा इम्पैक्ट करेगा? यस मैम, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टुडे कोई भी कंपनी अगर खाली फाइनेंस 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 है, खाली उसी को पकड़ के बैठेगी, तो लॉन्ग रन में इट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन. So yeah, it is written over here. If you can see it clearly, yeah. So it's written. It is now fairly okay. It's now fairly widely recognized that the concentration on only financial term बहुत narrow हो गया, तो आपको भाई आगे बढ़ना पड़ेगा if you want to achieve the goal for the company. तो financial performances बहुत ज्यादा holistic हो गए, बहुत historic है, बहुत पुरानी बात है. अब नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, और अगर आप ऐसे कर रहे हो तो फर्दर द मैनेजर्स further the managers are more likely to narrow their thinking अगर only financial performances are their indicators. But today we know कि आज हम ना आइसोलेशन में काम नहीं करते. आइसोलेशन में मीन्स कोई भी कंपनी अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रही है, ठीक है, तो वो अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर करेगी, इज इट गोइंग टू सस्टेन? मैम नहीं होगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेशन नहीं होगा. सो दे हैव टू आल्सो कंसिडर व्हाट. So non-financial performance indicators tends to make the managers also consider this stuffs. That is what they also have to consider the external factors, which is the customers and the competitors, उनके choices, उनके taste, ताकि वो long run में भी profits कमा सके. Otherwise खाली short run में profits earn करेंगे, फिर खत्म हो जाएगी बात. So that is not acceptable, correct? So in the current business, अगर आप question में पढ़ते हो, in the current business अगर आपको याद होगा तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते क्या क्या है, या अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है, यू मस्ट बी नोइंग कि क्वालिटी, डिलीवरी, रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन आर द मेन इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स का इंपॉर्टेंस है. कितनी क्वालिटी है, कितने रिजेक्टेड है, कितने दिन में वो डिलीवरी कर रहे हैं, कितने रिलायबल है रिसोर्सेस, आफ्टर सेल सर्विस कितने दिन में हो रही है, कितने कस्टमर सेटिस्फाइड है, कितने कंप्लेंट्स हो रही है. सो ऑल दिस फैक्टर्स नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड, एंड वी नो दैट कि इन सबको हम नॉर्मली परसेंटेज में या क्वांटिफाई नहीं कर सकते. सो वी टेक इट व्हाट वी टेक इट बेसिकली दिस फिट्जगेराल्ड एंड मून का मॉडल. ओके, यस. सो या अबाउट द सिस्टम उन्होंने पूछा है मेरे जीए कंपनी के बारे में, तो हम ठीक है अपने जीए कंपनी के बारे में बता देंगे. that it is particularly true for the service industry that quality and flexibility of services सबसे important है, अदरवाइज हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे. ओके, सो इट्स परफेक्ट. ओके, विद दिस हमने फर्स्ट आंसर तो क्लियर कर लिया, वेरी इजी वेरी इजी. अब उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है ये 14 मार्क्स. यूजिंग द इंफॉर्मेशन, हर एक इंडिविजुअल के बारे में बताओ. पहली है बात अबाउट द कॉम्पिटिटिवनेस. कॉम्पिटिटिव, कि कंपनी कॉम्पिटिटिव है क्या, ऐसा कुछ कोई और कंपनी के बारे में बताया है अपेंडिक्स में? कंपनी के बारे में ये तो नहीं बताया कि वो कितनी कॉम्पिटिटिव है, क्या है क्या नहीं. बट आपको नहीं लग रहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर इतनी मेरे पास बिजनेस की इंक्वायरीज आई एंड इतने कॉन्ट्रैक्ट बन गए, ओके आई एम जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट डिलीटिंग इट ऑफ, तो आपको समझ में ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? ओके, आई एम जस्ट कॉपिंग इट एंड पेस्टिंग इट हियर. तो आपको नहीं लगता कि अगर इतने कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास आए तो बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स किसके पास जाएंगे? ऑब्वियसली किसी और कॉम्पिटिटर के पास ही जाएंगे ना, हमारे पास नहीं आए तो. यस. So first over here about the competitive strategy says that total clients थे न्यू बिजनेस के 4230, इतनी मुझे इंक्वायरीज है, बट उसमें से खाली 3005 ही मेरे कस्टमर बन पाए. तो जो नहीं बन पाए वो चले गए कॉम्पिटिटर्स के पास. सो या भाई कॉम्पिटिटिवनेस है. सो इफ यू सी द परसेंटेजेस इट इज हाउ मच, 71 और 2 हमें मिला था. सो वी आर जस्ट गोइंग टू फॉर्मुलेट दिस. दैट इज न्यू बिजनेस का 3005 कंफर्म हुए आउट ऑफ हाउ मच, 4230. So 71% is the inquiry which turned into contract, and repeat business में it is 82.1. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटर है कि मैं रिपीट वाले बिजनेस वाले, मतलब मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है ना, वो क्या करें, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही ज्यादा रिटेन हो रहे हैं, नए आने से भी बेटर है कि जो है वो टिके हैं वैसा. ओके, यस. सो ये इंडिकेट क्या करता है आपको, आपको लिखने का, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट्स, खाली मार्क्स नहीं मिलेगा इफ यू जस्ट फाइंड द फिगर्स, आपको ये एनालाइज करके देने का उनको. This indicates that the competitive मेरी company is also winning the new contracts from both the new business and the existing customers. So it shows in percentage terms the new business is very good because the customer base is increasing.
खाली इतना ही है क्या कॉम्पिटेटिवनेस की कुछ और भी है? अगर आपने देखा क्वेश्चन में क्लियरली, यू विल गेट वन मोर स्टफ अबाउट द कॉम्पिटेटिवनेस। प्रीवियस ईयर में कितने थे, अब कितने हैं? मैम बढ़ गए, कम हुए? यस। अगर 2004 एंड 2000 की बात करें, सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट्स भी बढ़े हैं, इंस्टॉलेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स भी बढ़े हैं कंपेयर टू योर प्रीवियस ईयर। यस, सो वो भी लिखने का कि वो भी कितने परसेंटेज से बढ़ गए। ओके, सो या, आई जस्ट हैव टू राइट इट दैट वे। यस, so it also shows कि there is an increase in the number of contracts. So कितने contracts बढ़ गए? If you saw this, yeah, service contract 15,890 से 18,890. So अगर खाली ये देखो तो I think like 3,000 divided by 15,890. So I'll get the percentage. So services में भी 18.9 बढ़ा, installation में भी 18.7 बढ़ा. That means as per the situation both are at an equal position. ये indication है कि दोनों भी काम अच्छा हो रहा है. Okay, this shows that अब क्योंकि आपको पता है ओनली इफ यू आर जस्ट राइटिंग द आंसर इट्स नॉट इनफ, राइट? खाली फिगर्स तो नहीं लिखना, आपको उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी करना है. सो दैट शोज दिस गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस rather than just simply the turnover. The breakdown between services and the installation contract ऐसे होता है कि दोनों भी कॉम्पिटिटिव है बिकॉज दोनों भी इक्वल सिचुएशन से बढ़ गए हैं. यू कैन जस्ट रीड इट एंड फॉर्मुलेट इट. तो अगर अपने क्वेश्चन में पढ़ोगे एनेक्स्ट्रस, तो आउट ऑफ द एनेक्स्ट्रस मैंने ये एनेक्स्ट्रस का मतलब समझ लिया, मैंने ये एनेक्स्टर का भी मतलब समझ लिया. ओके, या आई यूज्ड दिस एनेक्स्टर का पार्ट आल्सो. लेट्स गो अहेड एंड रीड व्हाट्स द फर्दर क्वेश्चन. आपने ना क्या किया, यू हैव आंसर्ड अबाउट कॉम्पिटिटिवनेस. नाउ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आपको पता है व्हाट इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन? हाँ मैम, कितने स्टूडेंट्स के सामने कितने टीचर्स थे? यस एग्जैक्टली. आपके पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आए एंड आपके पास कितने पीपल है टू डू दैट. यस, it's known as resource utilization. Yes, that is known as resource utilization. हम आराम से करेंगे, there is no घाई, पक्का. आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा है ना? Okay. Yeah, just give me a minute.
तो अप नेक्स्ट देयर आर रिसोर्सेस. तो अगर मैंने रिसोर्सेस की बात की स्टूडेंट्स, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हैं ये कंपनी में. यस, सो लेट्स सी द अपेंडिक्स. कहाँ पे उन्होंने बोला है. यस, टोटल सर्विस कॉल आउट्स है 14390. ओके, 14320. एंड उसमें से अगर मैंने देखा सर्विस के कॉल आउट्स, ओनली सर्विसेज के, एंड देयर आर 95 एम्प्लॉइज फॉर दैट. तो पर सर्विस का कॉस्ट कितना आएगा पर सर्विस के लिए? एक एम्प्लॉय कितनी कितनी सर्विसेज करेगा. ओके, नाउ दैट इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन. So in this, installation is of no use. Yes. Okay. Yes. Only service का 95. So I have to understand कि अच्छा इतने सर्विस कॉल आउट के लिए पर पीपल कितने होंगे. तो नंबर ऑफ सर्विसेज अगर आप चेक करो तो इट इज बेसिकली 150.7. तो पर एम्प्लॉय या पर एम्प्लॉय उन लोगों को 150.7 सर्विसेज करने पड़ेंगे. तो कभी कभी अगर उनकी कैपेसिटी अगर 100 की हो एंड आप अगर उनसे 150 करवा रहे हो तो दैट इट विल बी डिस्करेज्ड. कभी आप उनको ओवर टाइम करवा रहे हो तो वो भी सही नहीं है. सो इट शोज, this indicates the productivity of service engineers. So productivity is an important aspect of cost control as salaries are fixed. Yes, the more the service callouts are made, the salary per callout is also reduced or profit per callout is increased. खाली इतने ही है क्या रिसोर्सेस? अगर आप और याद करो कि आपको कितने आवर्स लगते थे एंड हाउ मच आवर्स एक्चुअली होने चाहिए, आपने कितने घंटे लगाए वो काम करने के लिए. So total engineering hours were this much, and on a normal basis, the chargeable time was this much. So if I just take this as a chargeable time, okay. Yeah, this is the chargeable time. And what is the total hours which हमने लिए हैं? कंपनी ने कितने hours लिए थे? So yeah, this is the total engineering hours and this is the chargeable time. Okay. So we have to see कि हमने अच्छे काम किए या फिर बहुत ज़्यादा time लगाया. So for that we have this function over here. That is the total chargeable times and this is the total engineering hours. So अगर मैं percentage करूँ तो I'll get to know, okay, out of this 608,300 हमने लिया 628,300. So basically how much hours we would have taken? What's the percentage of work? Is it something around 92% आप efficient? For service you took very less, so it's like 78% you utilized it. Okay, this also shows that कि ये कितना होगा. So again this is an indicator which we have to process it properly. Okay, so again उसके related I'll write it. Again this is an indicator, the productivity or the productivity of each type of engineer, such as the greater the productivity of the engineer, the lower cost per unit and vice versa. मेरी कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है? माय कंपनी की स्ट्रेटेजी थी कि आपको क्वालिटी बढ़ानी है बट प्राइस इंक्रीज करके क्वालिटी बढ़ानी नहीं है. मींस प्राइस को मेंटेन करके क्वालिटी इंक्रीज करो या प्राइस को रिड्यूस करो एंड क्वालिटी मेंटेन करो. So this is the step. So the company's objective is to control the cost in order to increase the sales without increasing the price. It is not possible to completely adjust as no comparison is given in the question, so I cannot do it. Okay. Now the third point जो question में दिया था वो क्या था? So we understood about the resource utilization also. Third is the quality. Okay. So quality के related क्या होगा? Then मुझे complaints कितनी आई? अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होती तो डेफिनेटली आपकी कंपनी में कंप्लेंट्स इतनी नहीं आती. Agreed? Yes. So the third point over here was quality determinants. So अगर मैं क्वालिटी की डिटरमाइन कर रही हूँ तो इट सेज कंप्लेंट्स कितनी थी. ओके, सो अगर क्वेश्चन में कंप्लेंट्स की बात हो तो द कंप्लेंट्स वाज समथिंग 934 कंप्लेंट्स थी. आई विल जस्ट पोस्ट दिस. ओके, जस्ट आई विल शो यू द कंप्लेंट्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स. कस्टमर की कंप्लेंट्स थे दिस मच. ओके, एंड टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास कितने थे? आउट ऑफ दिस करंट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के थे इतने एंड करंट ईयर के इंस्टॉलेशन थे इतने. सो व्हाट आई डिड, मैंने खाली उनको डिवाइड किया. अगर मैं उनको डिवाइड करती हूँ डेफिनेटली आई एम गेटिंग दिस परसेंटेज. अब करके देखना स्टूडेंट्स, इज दिस विच शोज कि इंस्टॉलेशन में कंप्लेंट्स ज्यादा है कंसीडर टू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स. तो विच शोज कि शायद सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बेटर है. ओके, सो ये स्ट्रेटेजी आपको इम्प्लीमेंट करनी है एंड आई होप कि आपको ये सब पक्का समझ में आ गया है. ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे मेरे क्लाइंट के यहाँ पे रीच करने में आई टेक 3.2 आवर्स एंड ये कॉन्ट्रैक्ट को कस्टमर के साथ बदलने में इट टेक्स नॉर्मली 5 days. तो ठीक है, अगर आपको वो लगता है तो आपको वो भी लिख देना चाहिए सो दैट
सी वट एवर एंड हाउ मच यू कैन एलैबोरेट इट, प्लीज एलैबोरेट कर दो, ताकि माई एग्जामिनर विल बी हैप्पी कि आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को, पॉइंट्स को अंडरस्टैंड किया है एंड आपने फॉर्मुलेट किया है. ओके, अदरवाइज गेट सम मार्क्स आपके कट हो जाएंगे अदरवाइज. Okay, now let's go ahead to the last question, which they have asked about the fields carried in the moon. Yeah. Okay, last question क्या पूछा है उन्होंने? Yeah, if you can see this. Okay, ये हमने explain किया. Okay, in the context of the managing director की request, please explain the dimensions. अच्छा, dimensions and कैसे वो linked है with the standards and targets. Okay. So yeah, this is purely theory answer जो आपको present करने पड़ेंगे. And Fitzgerald and Moon वो normally बात करते हैं, covers about the two main concepts which is known as a result. So yeah, it's a result and determinants. Yeah. So results and determinants. Agreed? याद है आपको? Dimensions में there is results and determinants. Results में there are results में there are two parts, financial and competitor. अब अगर determinants की बात करते हो 4 points: quality, flexibility, innovation and resource utilization. आपको इन चारों के बारे में भी लिखना पड़ेगा. So भैया अगर वो determinants की बात करते हैं तो determinants are what guys? Yeah. So basically determinants are the factors जो कंपनी के results को influence करते हैं. The quality of मेरी कंपनी के engineers are how efficient they are, कितने काम कर रहे हैं, कितने flexible है, how आपको ये words आने चाहिए. How best they are utilizing the resources. What is the speed? How flexible they are. Yes. All the stuffs can also influence them. Yeah. Up next जो हमारे book building concept है या building block model. तो वो क्या करना चाहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. However, अगर आप चेक करो द बीबीएम, द बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल क्या करते हैं, इट सेट्स द स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट्स. एंड स्टूडेंट्स वो लोग सेट करेंगे स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट्स ऑन डे वन. और आपको ये अचीव करना पड़ेगा जो कि होने चाहिए क्लियर, इक्विवेलेंट टू एवरीवन, कंपैटिबल. ओके, सो द स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट्स आर द लेवल्स जिस पे आप अपने डायमेंशंस को मेजर करोगे. एंड एम्प्लॉयज में टेक द ओनरशिप ऑफ द टारगेट्स. So a key question for the MD will be like कैसे वो persuade करेंगे and कैसे वो अपने targets को achieve करेंगे. अगर उन्होंने अपने targets को achieve कर लिया तो definitely what they get guys, simple, उनको मिलेगा bonus. So targets कैसे होते हैं या आपको targets भी उनको ऐसे देने चाहिए जो achievable हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हवे में मैंने कुछ भी दे दी, नहीं. और उनको liable भी वही लोग होंगे targets को. Yes. So targets must be as such which are something which is achievable एंड उनको डीमोटिवेट ना करे. सो इट नीड्स टू बी मोटिवेटिव. या आपको याद होगा अगर रिजल्ट्स रिवॉर्ड्स, या सो ऑल दिस स्टफ नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. विद दीस स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे से एंड क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत अच्छे से क्लियर किया है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. यस, सो आई नॉट टेक मोर फॉर द टाइम. या एंड हम लोग तुरंत से जंप करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3 विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, which is very very important, which talks about a lot of concepts of ROI, RI, yes, and EVA. Students, अगर जिनको भी ये concepts में कुछ भी confusion है, please do watch my video. मैंने उसमें बहुत डिटेल में EVA, economic value added activities and all such stuffs मैंने बहुत ही डिटेल में क्लियर किया है. And that will any which ways be beneficial for you. Okay, just give me a minute. Yeah. Okay. Okay, so it will not take place. Okay, cool. So there is a lot of questions given in the material. Okay. Let's see, first of all हम क्या चेक करते हैं, मैम requirements. So these are my requirements and you know ना कि हमारे पास हमेशा in the question we get all those stuffs, the maths का table, the present value stuff and all. So I'm just, I don't know कि मुझे ये अभी need तो है ही नहीं. अगर आपको need हो तो you can consider it, but right now I'm not in the need, so मैं just उसको delete कर रही हूँ. It's exactly how the question came. Okay. So yeah, without any further delay, just let us read कि उन्होंने पूछा क्या है and हम क्या तरीके से आंसर को प्रेजेंट करने वाले हैं. Okay. Yeah. So first, calculate both return on investments and residual income. So this is from the chapter divisional performances and transfer pricing. Yeah. So आपको ROI and RI को formulate करना है. So we have a definition for ROI, return on investments, and residual income. So मैं जब return on investments की बात करती हूँ
तो मेरे कंपनी के, मेरे डिविजन के क्या रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं अगर मैं इन्वेस्ट करूं, उसको कंपेयर करना है कि अच्छा मुझे ये एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। बट आपको तब एक्सेप्ट करना पड़ेगा जब उतना मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो मेरी कंपनी का, दैट इज टू प्रमोट द गोल कॉन्ग्रुएंस। एंड रेजिडुअल इनकम मींस जितना इन्वेस्टमेंट है इतना तो मिनिमम कंपनी को चाहिए मल्टीप्लाइंग विद कैपिटल, वो अमाउंट एंड मेरे प्रॉफिट्स के मैच हो रहे हैं, अगर हाँ तो वी शुड गो अहेड, अदरवाइज नॉट। So this is a concept, अगर नहीं समझ में आता तो we have done a lot of concepts to calculate both ROI and RI for the first year trading. Explain whether the manager of the company, TT company, should invest in the project. चलो देखते हैं TT कंपनी क्या है। TT मोस्टली क्या होगा, आपका डिविजन होगा, तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, yes or no. Then we have a concept of calculate economic value added activities for the investments which is given. Yeah, for the investments which is given, okay, investments, and comment the investment opportunities from the viewpoint. Assume that, now this is important, assume that the economic depreciation and accounting depreciation are same. तो आप add minus करने की कोई need नहीं है, otherwise हम economic depreciation को minus करते हैं and accounting depreciation को add कर देते हैं. Yes. Then discuss the view of divisional measures such as residual income and EVA. क्या वो liquidity gearing के लिए fall करते हैं या नहीं? So we'll adjust that. Last but not the least, they have asked कि अच्छा कुछ concept होगा 5S model का। और मैंने जब आपको 5S पढ़ाया तो मैंने आपको बोला था कि 5S is basically for like अगर मुझे कुछ place clean रखनी है या फिर कुछ warehouse offices उसके related है। So they have given us कि please make the process, अगर आपके पास कोई warehouse है तो आप उसको कैसे maintain करोगे। It's easy students, it will not take more time. बहुत ही easy concepts है, trust me. Okay, now we can read the first story line what they have given us. Okay, so company's background is Edward Incorporated, that is EI, is a multinational diversified business which operates in a divisional basis. काफी सारे division में काम करते हैं, एक division, दो division, 3 division. So company है EI and काफी सारे divisions है. So खुद के divisions are not liable कि वो अपने profits बताए और अपने लिए काम करे, नहीं नहीं नहीं. Important है कि जो मेरी कंपनी है उसका भला हो, कंपनी का बेटर हो. So the manager of each division of EI is responsible, or the manager is responsible हर एक division का कि वो कैसे कैसे capital investment करना चाहते हैं. Now here there is a hint कि शायद ROI or EVA I have to find out. Okay, and it is paid an annual bonus also related to ROCE. Okay, this word is important. The cost of capital of the company is 10%, means अगर आपके पास ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट आया जिसमें कंपनी को मिनिमम 10% रिटर्न मिल रहा है, चाहे तो डिवीजन का इतना बेटर नहीं, मतलब डिवीजन का खुद का प्रॉफिट्स था, रिटर्न था 20%, बट अगर ये इन्वेस्टमेंट करने से भी 15% आ रहा है तो ठीक है, उनको एक्सेप्ट करो, बिकॉज कंपनी का तो 10% मिलना चाहिए. मीन्स कंपनी का जितना मिनिमम COC है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एटलीस्ट कोई डिवीजन उतना भी अर्न कर लेना. सो फ्रॉम द गोल कॉन्ग्रुएंस, कंपनी के पर्सपेक्टिव से उनको आगे बढ़ना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, बिकॉज वो कंपनी का भला ही होगा. यस, ओके. So this is my first division, which is TT division of my EI company. So TT division is a division which provides equipments to the building trade. Okay. The manager of my company is currently having the project to open up a new superstore. अच्छा, उसको कुछ superstore open करना है, जिसके लिए उनका initial investments था $1 million. Oh, and thank you, they don't have any residual value, जिसकी life है 4 years. And उन्होंने उसका directly present value बता दिया है, that is 0.35 million. Okay. First, आगे चल के क्या बोला उन्होंने, the profitability of the year is given. So what's the revenue guys? What's the revenue? अच्छा, the company का total revenue turns around to be how much? The revenue is 800. Okay. Cost of sales is 380. Okay. Minus करो, we get a gross profit is 420. Oh wow. The gross profit is 420. Simple. Expenses are given, wages. Okay. Advertisement cost याद आ जाना चाहिए. Depreciation is same, so कोई problem नहीं है. PBT and taxes, profit before taxes, then tax expenses and the net profits are also given in the question. So I hope कि मुझे जो चीज आपको रिफ्लेक्ट करनी थी वो आपको शायद आ रही होगी. Okay, yes, we'll go ahead. What they have asked us,
कंपनी का कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी वांट्स मिनिमम 10% अर्निंग्स, बट मेरी जो टीटी की इंडस्ट्री है ना, टीटी जो मेरा डिविजन है, मेरे डिविजन का टोटल आज की डेट में इन्वेस्टमेंट्स है 15.8% का। तो अगर मैं डिविजन की बात करूं, कोई भी डिविजन नया प्रोजेक्ट तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक उनको मिनिमम जितने अभी भी कमा रहे हैं उतना तो मिले। बट उन्होंने बोला कि अभी आप 15.8 के लालच में मत रहो, अगर आपको 10 से कुछ भी ज्यादा मिल रहा है ना तो एक्सेप्ट कर लो। ओके, बेस्ड ऑन द एवरेज इन्वेस्टमेंट्स, it is estimated that at the end of the first year of the trading, the cost of replacement will be 1 million. Okay, the managing director of my company is looking for the investments to stabilize. ठीक है, मुझे investments check करना है। And students, this is a second concept which is warehouse, जो मुझे पता है कि खाली कब कम आएगा मेरे 5S में, so I'm not going ahead. पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, कैलकुलेट द ROI and RI considering the projects. So let me start formulating the solution. Yeah, let me start formulating the solution. Students, it is important. Okay, so suggested answer says, what is the return on investments? अगर आपको पता होगा तो we take the profit divided it by what? Yeah, we take the profits divided it by average capital. Average capital. So yeah, PAT. We normally take it as PAT. So it's that way. Okay, you can see that. Yeah, ये फोटो एक्चुअली ऐसा हो गया था, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स बिफोर दैट, एंड इट्स एन एवरेज, कैपिटल एवरेज. ओके, सो इफ यू सी दैट गाइस, व्हाट इज द प्रॉफिट्स, कैन यू सी हियर प्रॉफिट्स, आपको कितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं मैम? इट्स 120. या प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी 120 डिवाइड बाय व्हाट इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट्स. अब आपको ये चेक करना पड़ेगा, योर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट आपको डे 1 पे लग रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 1 million, so it's 10 lakhs. But closing कितना होगा? Students, you have used it for 4 years. 3 by 4. So your closing investments will be nearly 3 by 4. Right? So 1 lakh will be the opening. And your closing will be how much? So your closing will be 750. So अगर आप उसका average करो, do you get 875? Yes, please do it. Are you getting this? Yes, are you getting 875? Yes, 875 will be my average capital investments. So what is my return? Simple, Baba. 12 lakhs divided it by 875. Are you getting a return on investment of 13.7? So as a company, 10% चाहिए था. As an individual division, 15.8. तो आपको लिखना पड़ेगा. Individually मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, but still अगर ये कंपनी की बात है तो I should go ahead with these things only. So you have to just write it that way. So the return of investment of my company is over here, the division is 13.7, which is obviously lesser than the company के division का, but considering the company की situation, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा. Now what is residual income? If you remember residual income, एक situation होता है, देखो कि आपको कितना प्रॉफिट्स है, खुद के प्रॉफिट्स अलग रखो, कितना इन्वेस्ट करोगे, कितना आपको रिटर्न चाहिए. अगर आपकी प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रोजेक्ट में आगे जाओ, वरना प्रोजेक्ट में आगे मत जाओ. Yes. So residual income states that, profits before income taxes, मेरा average investments कितना है 875. So अगर उसका 10% करूँ, I'm getting 8750. So अगर उनका difference करूँ, I'm getting positive 32,500. So yeah, I should go ahead. मुझे लग रहा है आराम से मुझे जाना चाहिए आगे. So yes, I should go ahead. So obviously you should go ahead and calculate it for sure. So yes, it's a positive thing. So yeah, you should go ahead. Okay. Now the concept of second question comes, which is EVA, economic value added. So what is EVA? अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 पता है, उन्होंने बोला कि do it for EVA. So this is a formula. Economic value added means NOPAT minus WACC. NOPAT means net operating profit after tax. Okay, उसमें हम कुछ adjustments करते हैं. Yes, कुछ interest में adjustments करते हैं, कुछ non cash expenses में adjust करते हैं. याद करो non cash expenses में add करते हैं, deferred expenses में add करते हैं, and depreciation. We just have some adjustments, right? So there is a question of advertisement, अगर आपको याद होगा. So advertisement का खर्चा ऐसा माना जाता है कि आज आपने किया है कुछ नहीं, पर उसके बेनिफिट्स आपको बहुत लॉन्ग टर्म मिलने वाले हैं. तो पूरा का पूरा खर्चा आज हम माइनस नहीं करते, because we want to give something to others also. Yes, and my debt holders.
So that is NOPAT. Minus capital charge. WACC means weighted average cost of capital, which says आपकी टोटल डेट और आपकी इक्विटी का पोर्शन कितना है, उनके रेट्स क्या है. सो इट्स समथिंग लाइक KE multiplied by WE plus KD into WD, 1 minus tax. So yes, this is my formula. अगर आप क्वेश्चन चेक करो तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या दिया है, 90. इज इट गिवन 90? प्लीज चेक इट. या प्लीज चेक द क्वेश्चन. या इट्स गिवन लाइक दैट with 90. या उसमें आपको डेप्री माइन ऐड करना पड़ेगा क्या, तो आप बोलोगे कि अगर ऐड करोगी ना तो वही इकोनॉमिक है, वही है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इट्स गोना बी सेम. बट हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को वापस ऐड बैक कर लेंगे. सो माय टोटल नोपैट विल बी 130 डिवाइडेड इट बाय, आपको देखना पड़ेगा ये नोपैट है. फिर आप चेक करो कि कंपनी का क्या है WACC. इट्स 1 लाख, सॉरी 1 million. So 10 lakhs into 10% cost of capital. So it's 100. So I just minus it and I'll get EVA. Very, very simple. कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में. Seriously, the most easiest question I have ever seen of my ये WACC का सबसे easy question है. Okay. So with this I get my NOPAT. With this I get my NOPAT. Yeah, profit after tax. Yeah, adding back the advertisement. So my NOPAT is 130. What is my WACC? Yeah, cost of capital कितना आएगा स्टूडेंट्स? डे 1 पे 1000 था. या स्टार्ट, क्योंकि आपको याद है कि हम हमेशा चेक करते हैं स्टार्ट का, नेवर द एंड. यस, 1000 याद होना चाहिए. 10%. सो अगर माइनस करो 130 minus 100, so you get a EVA TM at the rate of 30, which is a positive EVA. अगर ये आपका पॉजिटिव EV है you can go ahead with the project. You can go ahead with the project, initial project also. Yes, clear? Okay. So everything you have to just measure it. जो भी आपने अभी लिखा उसको उनको कंसिडर करके उनको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को that as the EVA economic value added investments is positive, the manager should conclude that कि investments अच्छा है, the board can go ahead. Yeah, the board can go ahead. Okay, yes, clear. Yeah, okay. Something about gearing ratios में उन्होंने पूछा है तो मैं लिख देती हूँ उसके बारे में भी. Okay, that is my residual income. And third question was that the residual income and EVA are both the financial measures. Both can be used to assess कि कितना उनका historical performance is better था या worst था. Okay, that can help them. Similarly, दोनों भी success के लिए काम आती है to find out कि कितना profit है, कितना return है. So it's better. But students, मैंने ये concept में एक topic को leave करा था. So let's go to 5S. Yeah, the warehouse. एक बार हम warehouse का concept read कर लेते हैं and then we can move ahead. So yeah, if you can see this warehouse. अगर आपको 5S याद हो तो हमने पता है एक एग्जांपल लिया था ऑफिस का. ऑफिस नॉर्मली अगर मैंने कोई भी फाइल्स यहाँ वहाँ रखी है, न्यूज़पेपर, पेपर्स, एवरीथिंग लिया, तो इट इज वेरी शेबी. तो पहले मुझे वहां से क्लीन करना पड़ेगा और ऑर्डर में रखना पड़ेगा कि मुझे कौन सी फाइल इंपॉर्टेंट है ताकि मैं उसे इजीली फाइंड कर दूं. उसके बाद उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मुझे उसको अरेंज करना पड़ेगा कि चलो ए फाइल क्या है, बी फाइल क्या है, नंबर 1 2 3 ऐसा. उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा जो वर्क प्लेस है ना वो बहुत नीट एंड क्लीन हो ताकि मुझे काम करने का मन हो. फोर्थ, आपको पता है मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मेरी जीएसटी फाइल्स सब रेड कलर, यस, इनकम टैक्स सब ब्लू कलर. सो इट इज अ स्टैंडर्डाइजेशन. एंड लास्ट, आपने जो ये सब काम किया है 1-2 दिन का मत करो, इसको कंटिन्यू करो ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए एंड आप आराम से, मतलब आराम से योर वर्क प्लेस विल बी क्लीन एंड वर्किंग विल बी गुड. तो सेम उन्होंने बोला है कि भाई वेयर हाउस. सो माय टीटी कंपनी, माय टीटी डिवीजन has 3 warehouse in the country. Okay, उनके पास था टोटल 3 divisions है. In 3 division, sorry, 3 warehouses है in the country in which it is based and which stores all the equipments. ठीक है, वो ना क्या करते हैं, सारे के सारे इक्विपमेंट्स को वहीं पे वेयर हाउस में स्टोर करते हैं एंड वो सेल करते हैं. तो उनको तो अच्छे से स्टोर करना चाहिए, है ना. यस, some are sold to the third party and some are sold to the direct customers also. ठीक है, अच्छी बात है. The performance of one warehouse बहुत खराब हो रहा था. क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे पता है, काफी सारी चीज यहाँ वहां रख देते थे, फिर सब गुम हो जाती थी. फिर अगर उनको चाहिए ना, अगर शेल्फ्स में रखने की जगह नहीं होती तो वो फ्लोर पे रख देते थे. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट. So the performance of one warehouse has deteriorated very badly
and the number of deliveries also have either turned to be missing. मतलब उनके आइटम्स भी मिसिंग हो रही थी, कभी कभी रॉन्ग आइटम्स आ जा रही थी, कभी कभी स्टाफ्स को प्रॉब्लम थी कि कहाँ है भाई, ढूंढ के दिखाओ. इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. सो वन ऑफ द टीटी के लार्जेस्ट कस्टमर ने ऐसे बोला कि भाई आप अगर अच्छे से आपकी इन्वेंट्रीज वगैरह रखोगे नहीं तो आपको आगे चल के ऑर्डर्स भी नहीं मिलेंगे, तो प्लीज उसको अच्छे से मेंटेन करो. राइट. सो फॉर दैट एक न्यू मैनेजर को अपने अपॉइंट किया. अ न्यू वेयरहाउस मैनेजर वाज बीन अपॉइंटेड एंड उसको लगता है, ही बिलीव्स दैट द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग गुड हैज बीन रिस्पॉन्सिबल. कि आपको प्रोसेस अच्छे से करने होंगे. मींस व्हेन इनबाउंड डिलीवरीज, मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर अभी मेरे वेयरहाउस में कुछ स्टोर करना है तो मुझे कुछ मिलेगा. राइट. मुझे जो इन्वेंटरीज मिली उसको मुझे थोड़े ही टाइम में सब जगह पे सही करना है. वो क्या करते थे, जब मिलती है 2-4 दिन के बाद करेंगे, अरे एडजस्ट, अरे तब तक खो जाएगा, है ना. यस. So when inbound deliveries from TT suppliers were received, products are stored in the nearest available place. अच्छा, जहां जगह मिली नजदीक में रख देते थे. Which could be the warehouse का floor if no space is available in the shelves. ये बहुत ही खराब काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए. The warehouse manager have now instructed the staff. अब उन्होंने बोला कि ऐसा जो काम कर रहे थे ना अब मत करो. ठीक है. उन्होंने बोला कि पहले उनको इंस्ट्रक्ट किया that all the products coming into the warehouse उनको अप्रोप्रिएट शेल्फ में रखो, वो भी 2 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 2 hours ऑफ डिलीवरी, ताकि नथिंग इज मैनिपुलेटेड, नथिंग इज मिस्ड आउट. दैट्स अ गुड स्टेप. राइट. या फिर उन्होंने क्या बोला कि ए टू जेड के ऑर्डर्स में रखो. जो सबसे ए है, जो सबसे काम की चीज है उसको आगे रखो, जो नहीं है उसको पीछे करो. ओके. दिस हेल्प्ड द मैनेजर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी व्हिच सेज कि ऑल द प्रोडक्ट्स आर टू बी स्टोर्ड इन द अल्फाबेटिकल डिस्क्रिप्शन. दैट इज ए को नियर में रखो, जेड को दूर रखो. ओके. या अब आपके कोई आइटम्स खो ना जाए इसके लिए आप RFID टैग्स लगाओ. टैग्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग्स, मींस उससे मैं जिसको GPS आई कैन ट्रैक इट कि वो कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, वेयर इट इज केप्ट एंड एवरी स्टफ. सो द मैनेजर हैज आल्सो इम्प्लीमेंटेड अ पॉलिसी इन विच वो RFID टैग्स लगाती है, जिससे कि मेरे को आराम से पता चल जाता है कि वो मतलब मेरी इन्वेंटरीज कहाँ पे है, तो वो खो नहीं जाती है. अलॉन्ग विद दिस मेरे मैनेजर ने क्या किया, वो स्पॉट चेक करती है, कभी भी आके अपनी इन्वेंटरीज के काउंट चेक कर लेती है ताकि श्योर है कि अभी कुछ गड़बड़ ना हो. द मैनेजर हैज बिगन टू स्पॉट चेक द इन्वेंटरी काउंट्स टू चेक द वॉल्यूम कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, अगर कुछ सेल्फ खाली वाली पड़े. तो दे हैव आस्क्ड अस द लास्ट क्वेश्चन दैट प्लीज रेफर विद द 5S अबाउट द लीन प्रिंसिपल्स सो दैट द न्यू मैनेजर हैज टू प्रोसेस, ताकि वो अचीव कर जाए. स्टूडेंट्स, द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में आया, so I'm wondering it out, like how will you not get like 8 marks? It's something which is so superly achievable. Yeah. So yes, with these we can just start writing the answer. And we have some words of lean system, that is 5S. Yes. Scrutinize, simplify, standardize, sustain. That is, first of all, these are the words which we need to learn it. Scrutinize means unwanted thing, remove. Simplify, set in order, ABCD. Sanitize, please keep the environment, the office, the workplace, the warehouse very clean. वो फ्लोर पे प्लीज मत रखो. स्टैंडर्डाइज एक बार मत करो. ठीक है. स्टैंडर्डाइज मीन्स एक सीक्वेंस में करो. ठीक है. एंड सस्टेन मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए सेल्फ डिसिप्लिन रख के करते रहो वो चीज. ओके. सो नाउ इंडिविजुअल थिंग आपको एक्सप्लेन करना है. अगर वो सिंप्लीफाई है, ओके, दैट इज सिस्टमाइज. फर्स्ट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, पहले जो काम की चीज है ना उसी को रखो. मीन्स द प्रोसेस, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स, ताकि आप उसको इजीली फाइंड कर सको. उसके लिए हमने क्या किया, RFID का सिस्टम भी इंप्लीमेंट कर दिया ताकि आप इजीली एंड क्विकली उसको फाइंड कर सको, तो प्रॉब्लम नहीं होगा ढूंढने का बार बार. या दिस इज अ गुड प्रोसेस व्हिच वी नीड टू डू. सेकेंड प्रोसेस व्हिच इज स्ट्रक्चराइज, मीन्स आप ऐसे सॉर्ट करो कि जैसे जो चाहिए वो आपको मिल जाए. मीन्स ABCD के ऑर्डर में आप उसको सेट करो. सो दिस इन्वॉल्व्स प्रायोरिटाइजिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसको आगे रखो. राइट. जैसे कि ABCD के नेम से भी हम उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में भी हम उसको रख सकते हैं. या सो दैट शोज द न्यू वेयरहाउस में RFID का तो टैग है, बट ये इनफ नहीं है आपको. और उसको बेनिफिशियल बनाने के लिए व्हाट यू शुड डू, द न्यू प्रोसेस डज नॉट हैव हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज यूज्ड. सो आपको वैसे रखना पड़ेगा. नेम स्टार्ट्स विद A, उसको पहले रखना है, एंड लेटर विद B and C and D. देन आपको आपके वर्क प्लेस को बहुत ही क्लीन एंड टाइडी रखना पड़ेगा. मीन्स यू आर सपोज टू सैनिटाइज इट. तो डर्टी एंड अवॉइड क्लचर्स.
ऐसा मत करो। सो गंदगी मत रखो, मेक इट क्लीन। सो आपका भी वर्क प्लेस अच्छा हो, आपका भी मन हो वहां पे काम करने का। देन स्टैंडर्डाइज इट, व्हाटएवर वी आर डूइंग इट, उसको सिंपली रखो, उसको सिंप्लीफाइड करके रखो, उसको लाइक एक मेंटेन करके रखो। ओके, द प्रिंसिपल सेज कि वो स्टैंडर्ड्स को आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में डेवलप करो ऐसे कि वो तुरंत हो, जैसे कि विद इन 2 आवर्स वी आर डूइंग इट, या विद इन 2 आवर्स आप कर रहे हो और वो गंदा नहीं कर रहे हो क्योंकि आप उसको शेल्फ्स में अच्छे से रख रहे हो विद इन 2 आवर्स। एंड लास्ट आपने जो प्रोसेस किया है उसको कंटिन्यू करो, ऐसा नहीं है कि एक बार किया तो बात करो। So it needs to be done always. So it's a self-discipline. So we have to just maintain it for the longer period. Means this principle needs to ensure that staff are motivated and they make the continuous improvements daily, daily, daily. And अगर हमने ये किया continuous improvement, तो हम पक्की बात है कि हम lean system में develop हो जाएंगे and हम 5S का जो model है ना वो भी achieve कर लेंगे. Yes, so definitely we'll achieve the 5S model and we'll be the leaner. Yes, students, with these we have completed the first mock paper. एंड मुझे लग रहा है कि विद इन अ पीरियड ऑफ लाइक 3 आवर्स भी नहीं लिया हमने, एंड हमने ये पूरा का पूरा पेपर इतने अच्छे से कर लिया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज मुझे मैसेज या फिर मुझे चैट में बताओ। एंड अगर यू वांट स्टूडेंट्स के हम और ऐसे पेपर्स करें तो प्लीज टेल मी व्हिच ईयर्स पेपर यू वांट, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको ये टॉपिक्स में कुछ भी क्वेरी है तो आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे आप डीएम करो या मैसेज करो या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, बट आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट पे डाउट है, वी हैव 5 लेक्चर्स, प्लीज उस पे से गो थ्रू करो। क्विक रिविजनरी सीरीज है हमारी, उसमें आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग सो लवली एंड या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम कल एक और मॉक पेपर करने वाले हैं। सो ऑल